Hello and good morning, and welcome to this Economy Magic Show. Hope you can all see and hear me. We'll just start in 1 minute. It's still 10:59. Had a particularly tough day yesterday. काफी लंबी क्लास हो गई. I hope you're all doing well. I hope you can see and hear me. For the last अभी शुरू करते हैं. I will just wait for everyone to join. For the last 1 week, I have slept on an average 3 hours a day, simply because of the DAF sessions and everything. Average, I have slept 3 hours a day. I have worked average for 12 hours a day, 12 to 13 hours a day. So, but honestly, आपको एक बात बताता हूँ. I think this is the indomitableness of the human spirit, that even this you can adapt to. इससे भी आप adapt हो जाते हो. ये भी आपको एक level के बाद उतना tough नहीं लगता. Like now, I don't feel this is such a big deal. I have adapted to it. ठीक है, of course, I need to catch up on my sleep. But if I have to now study 10-12 hours a day, it should absolutely be not a problem. तो मैंने सोचा इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कल सुबह. I'll tell you how my daily schedule looked like and how I managed it. It's not a difficult task, honestly. It will be difficult maybe for the first few days. थोड़े शुरू के दिनों में एक दो difficulties जरूर आएंगी. But eventually you can manage and इसके returns बहुत ज़्यादा हैं. देखो, ultimately you are competing with people here, right? And if you can produce more output, if you have 2-3 hours of more output every day, simply means that if you are going to have 2-3 hours of better outcome, and over a year you are going to have, let's say you have 20 hours more every week, you are going to have about 100 hours more over the year. 100 hours can be used to finish one subject, to study one subject better. 100 hours more can translate into 10 more marks in the mains. And if 10 more marks in the mains can translate into a rank and not getting a rank. आपको कई बार मैंने एक बात बताई है, मेरे फाइनल कट ऑफ से 10 नंबर ही ऊपर हैं in the actual final list, right? These things you can manage. Somebody's writing this is good in the short run. Exam is also in the short run. Give the exam in the short run only, है ना? Don't give the exam in the long run. Long run में exam देना पड़ा, थोड़ी हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए. पंचवर्षीय योजना ना बनाएं इसको. Please try and get selected in the first 3 attempts. Honestly, मुझे लगता है कि 3 महीने is 3 attempts is probably the best outcome possible. उसके बाद you should do a job. Right? Before we start today, I will just एक और चीज बताता हूँ आपको लाइफ में. Your ability to predict things. Predict things how? Predict things about yourself. For example, if I say I have to give prelims next year, if I can predict today whether I will be capable of writing a good attempt or not, my decisions will be much better. If I have to choose a career, if I can predict in which career I am going to perform the best, I am going to have a great outcome. So your ability to predict things is very important, right? And that is not only about yourself but also the world. If you can predict things, you will have better outcomes everywhere, right? If you can predict things before they appear in the newspaper, आज का पेपर है ये. If you can predict things and teach them one day before, if you can predict things one day before, it really helps impress people. जैसे आई एम श्योर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा. है ना? If you can predict things early, it leads to very good outcomes.
चैट प्राइवेट करने का टाइम आ चुका है मुझे लगता है। अरे गॉड नहीं बनते आप प्रेडिक्ट करने से यार, यू जस्ट बिकम अ बेटर डिसीजन मेकर, you just become a better decision maker, that's it. The second thing, I always deliver on my liabilities, whatever liabilities I have created for myself, right? Whatever liabilities I create for myself, I will deliver on them. That has been the case in the past, and I will hope and pray for myself that that is the case in the future also. आपको मैंने बोला था that from 20th I had given you this promise, I had created this liability for myself, that from 20th we will do active recall of polity alongside this, क्योंकि 19th को डैफ की लास्ट डेट था, मैंने आपको कहा था कि हम पॉलिटी की एक्टिव रिकॉल करेंगे. नाउ दिस प्रॉमिस फॉर मी बिकम्स, this promise that I made that we will revise polity through active recall will become a liability for me. Now to back this liability, I have an asset here with me. These are my notes of polity. ठीक है, this notes now, this is now an asset. This asset, because I have this asset is able to, because on the basis of this asset I'm able to create this liability. अब कैसे होगा एक्टिव रिकॉल? एक्टिव रिकॉल ऐसे होगा कि आज ये नोट्स खुलेंगे ऐसे लास्ट के इन 15 मिनट्स रैंडमली किसी भी पेज पे, जिस पेज पे खुल गए उससे क्वेश्चंस हैं और आपको सारे आने चाहिए. नाउ जिस पेज पे खुल गए वो आपकी किस्मत, ठीक है. आई विल ओपन दीज 15 टाइम्स एट रैंडम पेजेस and I will ask 15 questions and you can mark yourself, you can see what sort of score you are getting, etc etc. ठीक है, चल आज की क्लास शुरू करते हैं. Let's start today's class. Right? ये जादू तो हमने देख ही लिया. We saw this जादू. कल ये डिस्कशन चल रही थी, आज पेपर में आ गया. ठीक है, कल ही डिस्कशन चल रही थी हमारी इस बारे में. Now the aim is by the time this course is over, all of this entire page of economy you will probably never need to read, because you will understand what is happening. You will need to read for current affairs, for the new development, whatever, but at least you will understand everything that is happening. Otherwise, if I had not explained this to you yesterday, this news might not have been readily apparent to you. But I'm sure all of you will agree that now this is not a hurdle in reading. That is why I say don't read. मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स की फर्स्ट क्लास में बोला था, when I took the orientation session with you, it was in this room, I said this exact thing. Don't read the newspaper. Don't read the newspaper before you have read the foundation subjects. कोई point ही नहीं है. Now see how easy of a job this is. Now I know what sort of job this is going to be. Right? अब कोई इतना कोई मुश्किल काम है नहीं, है ना? चलो. Now, so far yesterday we have read monetary policy, है ना? हम monetary policy पढ़ रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं. Let's continue with what we were reading. ये सब हमने कल पढ़ लिया था. Money creation, money supply is money multiplier into initial amount of money created by RBI. This M0 was the high-powered money. Right? M1, M2, M3, M4 we have read. Balance sheet of RBI we have studied yesterday. Then going forward, we understood what seigniorage was, why RBI transfers that to the government, how RBI transfers the capital adequacy framework as per the recommendation of the Bimal-Jalan committee. Then we have read the inflation targeting framework also. We have read CDR, RDR also yesterday. Then control of money supply. We were reading these situations, these four basic situations of high inflation, high growth, high inflation, low growth, low inflation, high growth, low inflation, low growth. These four situations we have read. ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं. Now, यार चैट बंद करो यार, मतलब please stop. If you have not seen yesterday's class, oh, background noise. There is background noise. Wait, let me check.
Why is there background noise? एक just give me 1 minute. बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको मैं नहीं रोक सकता हूँ. Just wait 1 minute. Just wait. बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको मैं नहीं रोक सकता. Just wait. Just wait. बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको मैं नहीं रोक सकता. 1 second. I'll just check something is wrong. Give me 1 minute. I'll just come. यार उसके दोनों माइक ऑन है, बहुत बैकग्राउंड नॉइस कंप्लीट हो रही है. उसका खड़ा कहां है? ऑन है. सीरियसली की बात आ रही है. कोई नहीं. Done. Now it's okay. मैं बताता हूँ क्या हुआ था. This wireless mic has a receiver. नहीं, अब नहीं आएगी. मैं बताता हूँ ना क्या हुआ. This wireless mic has a receiver. Receiver connects to the computer. 2 wireless mic हैं. एक ये है, एक और है. दूसरा ऑफिस में बाहर पड़ा था. Where our counselors sit. So you were hearing the voice of the counselor. I think now it should not be a problem. है ना? I hope it's okay now. ठीक. Now, yesterday we were reading this. High inflation, high growth. What will the RBI do? Cut down prices. Needs to get prices down. When prices need to come down, what RBI needs to do? Needs to make money more expensive. So increase or rather decrease the money supply. We have read this yesterday. Now, the terms are important. When RBI decides that we need to increase the money supply or decrease the money supply, we have read this yesterday. What are these decisions called? ये हमें पढ़ना जरूरी है. We have to read these decisions. मैंने आपको कहा था आप खुद पढ़ के आओगे. I'm assuming you have read also. Increasing money supply is expanding the money supply. So this is called expansionary monetary policy. Decreasing money supply is contracting the money supply. Contraction. This is contractionary monetary policy. Right? इसके और भी कुछ नाम होते हैं. It's written in your printed notes, but ठीक है. The basic idea is clear. ठीक है. The third thing could be RBI decides to keep the money supply same. RBI decides to keep the money supply same. What is this? This is neutral monetary policy. RBI decides to stay neutral. These 3 things we know. Now, when RBI decides its monetary policy committee हम कल पढ़ेंगे. When RBI decides its monetary policy, when RBI says, okay, this is what we are going to do in our monetary policy, they also tell their outlook for the future. They also tell us कि आगे हमारा आउटलुक क्या होने वाला है. What is going to be. जैसे मान लो आज RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई. RBI has a monetary policy committee. What this is we'll see tomorrow. आज RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई and they took one of these decisions. They also tell us what will be their stance going forward. What will be their outlook going forward. Now in the future what are they looking at. अब उन्हें क्या लग रहा है कि किस टाइप के डिसीजंस हम लेना चाह रहे हैं. Why are they doing this? Because they want to maintain stability in the economy. Their main job is to maintain trust in the economy. If there is a predictable future, right? If they are saying that अच्छा आज ये सिचुएशन है, आगे हमें लगता है जीडीपी ऐसे जाएगी, इन्फ्लेशन ऐसे जाएगी, इसलिए आगे हम इस तरह का स्टांस लेके बढ़ेंगे. We might go away from our stance also. आरबीआई आपको कहता है कि आज हम मॉनेटरी पॉलिसी को न्यूट्रल रख रहे हैं, मनी सप्लाई को न्यूट्रल रख रहे हैं, राइट? वी आर कीपिंग द मनी सप्लाई सेम, बट इट लुक्स लाइक इन द फ्यूचर वी माइट नीड टू कॉन्ट्रैक्ट दिस मनी सप्लाई. In the future, we might need to contract this money supply. This is what they are saying to us. Why are they saying this? So that we know that in the future, what sort of decisions RBI is going to take and people can plan accordingly. People can plan their decisions accordingly because
These decisions are not made only on everyday basis. ऐसा नहीं है कि आज मनी सप्लाई कम करी तो आज ही बैंक्स ने लोन करना बेटर कर दिया, right? Everywhere there is a time lag. So if you know what is going to happen in the future, or you have a basic idea, at least you can plan better. This thing, one is RBI's decision. This is RBI's decision. This is RBI's stance. Stance is for the future. हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, दिस दे आर टेलिंग अस. नाउ स्टांस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दिस इज आल्सो गिवन इन योर नोट्स. ये नोट्स मैंने बोल भी दिया, जस्ट गेटिंग अपलोडेड, राइट? दिस इज ऑलरेडी अपलोडेड, राइट? स्टांस मींस नथिंग बट आवर एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिसीजन. Expected future decision. RBI communicates this to us. What future decision we are going to take. This RBI communicates to us. One is hawkish stance. Hawkish. Hawk is another word for eagle. One is dovish stance. Dovish is another word for dove bird. These are informal terms, but these are the ones that are used. Hawkish stance means that in the future, RBI is going to contract the money supply. They are going to have, sorry. I'm so sorry. Yeah. RBI is going to contract the money supply in the future. So contractionary policy in the future. RBI says today money supply is same. Today our monetary policy is neutral, but looking at future trends, it seems that we might have to contract the money supply in the future. Therefore, our stance is hawkish. Our stance is hawkish. Then there is dovish stance. Dovish stance is expansionary policy in future. Expanding in future. Today our monetary policy might be anything. हो सकता है आज न्यूट्रल है, आज एक्सपेंशनरी है, आज कॉन्ट्रैक्शनरी है. दिस इज अ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिसीजन. देयर इज नो लिंकेज बिटवीन दीज टू थिंग्स. दे माइट से दैट टुडे माय मॉनेटरी पॉलिसी इज न्यूट्रल, बट इन द फ्यूचर माय स्टांस इज हॉकिश or it is dovish. This is merely a projection of the future कि future में I will keep it contractionary, I will expand it, or I will keep it neutral. RBI is just predicting what they will do in the future. They are not held to this prediction. हो सकता है RBI आज बोले money supply we are keeping same, monetary policy is neutral, for the future my outlook is hawkish. Hawkish outlook है in the future. Then when the next monetary policy meeting happens, let's say something has changed. हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ चेंज हो जाए. Now they might not have to stick with this. हो सकता है वो इसके opposite भी decision ले ले. This is merely a future prediction. They can take a decision opposite to the stance also. They generally don't, but they can. समझ आई ये बात? Stance is expected future decision. What decision we are going to take in the next monetary policy meeting. This we are just expecting today. हो सकता है कुछ गलत हो जाए, right? हो सकता है ना ले पाए. जैसे I am predicting that I will take a class on Monday. I might not be able to. This is I am taking a class today. This is my today. This is my prediction for the future. This might change. बात समझ आई? Stance and actual monetary policy. Monetary policy can be expansionary, contractionary, or neutral. Stance is usually called hawkish, dovish, or neutral. Is this clear? I hope you have understood the logic here. Stance and current policy decision. कोई linkage नहीं है आपस में. There is no linkage between these two things. Okay. Now, let us now try and understand how do banks make money. अब बहुत important, अब हमारी actual class शुरू हो रही है. We are trying to understand how banks make money. Banks and how they make money. Not banks create money. Creation of money, money multiplier by banks we have seen. वो हम देख चुके हैं. How banks
earn money. Rather, I should write earn. Or rather, I should write how do banks earn profit? How do banks earn profit? This we'll see. How banks multiply money we have seen. Now how banks earn profit. This is a bank. There will be a deposit. Bank will give some interest rate. Bank will give out a loan. Bank will receive some interest rate. Deposit of the bank is asset or liability, ये आप बताओगे. Loan of the bank is asset or liability, ये आप बताओगे. ठीक है. Now we know that bank is also keeping some money as reserve here. Very good. Deposit is liability, loan is asset. Right? Deposit is liability, loan is asset. For the bank to make money, this interest rate needs to be lower than this interest rate. This needs to be high, this needs to be low. जो difference होगा, that amount of money bank is going to make, है ना? यहां पर लोन का जो इंटरेस्ट रेट बैंक रिसीव कर रहा है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है, इनके बीच में जब डिफरेंस आएगा तब बैंक पैसा बनाएगा. राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस with an example in a bit more detail. Right? Let's understand this. Now, let's say bank receives a deposit of rupees 100. Reserve deposit ratio is 10%. That means rupees 10 have to be kept in reserve, right? This is the deposit they have received. Bank can loan out how much here? Only 90 rupees. Bank charges an interest rate on its loan of 10%. What is the money bank is going to receive? 99 rupees it is going to receive. So 9 rupees is the effective earning of the bank. Bank has a deposit of rupees 100. At this deposit, bank decides to pay 4% interest. So bank will pay back 104 rupees. Clear so far? Bank gets a deposit of rupees 100. Bank promises, I will pay you 4% interest rate. Bank will pay back 104 rupees. Reserve deposit ratio is 10%. Bank has to keep 10 rupees as reserve. Loan bank gives at 90 rupees. 90 rupees interest rate bank charges is 10%. Bank receives 99 rupees. Effective earning of bank is 9 rupees. Now bank has spent 4 rupees here. Bank has earned 9 rupees here. And the effective earning between these two is 5 rupees. This is the money that bank actually earns. Now let us see what sort of factors does this depend on. ये factor किस पे depend करता है? These factor, this profit that the bank will make depends on 3 things. Firstly, it depends on this interest rate. It depends on this interest rate, and it also depends on this reserve. है ना? क्योंकि 90 rupees ही लोन हो पा रहे थे. The interest rate on savings account, bank has to give on entire deposit. The interest rate on loaned funds, जो लोन किया है, that will only be earned on funds that the bank has loaned. बैंक ने 90 रुपए लोन किया तो यहीं पे इंटरेस्ट मिलेगा, 100 पे नहीं मिलेगा. 100 पे बैंक को देना है. इनके बीच में डिफरेंस क्या है? रिजर्व. जैसे इस एग्जांपल में. आई होप दिस इज क्लियर. राइट? आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन. है ना? समझ आ रही है बात? सो बैंक विल पे इंटरेस्ट रेट ऑन एंटायर डिपॉजिट. Bank will earn interest rate on loaned funds. The difference between these two is the reserve deposit ratio. है ना?
अब अगर आप एक बैंक के सीईओ होते, आप एक बैंक के सीईओ होते और आपको कहा जाता अपना रिजर्व डिपॉजिट रेशियो खुद डिसाइड कर लो, तो आप क्या कहते? What reserve deposit ratio would you like? Only think for your own self. Maximize only your own utility. आपके लिए रिजर्व डिपॉजिट रेशियो की बेस्ट वैल्यू क्या है? अगर आप बैंक के सीईओ, व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू? इफ यू आंसर दिस करेक्टली, आई हैव अंडरस्टूड दैट यू हैव अंडरस्टूड. ऑब्वियसली यू कीप इट जीरो. जीरो रखो ही मत. अगर आपने जीरो रखा तो देखते हैं, आपका जीरो रखा तो ये लोन अमाउंट भी 100 होता. आप यहां पर 10% अर्न करते, you would have made 110 rupees. Your effective earning would have been 10 rupees. You are paying 4 rupees. Instead of 5 rupees, you would have made 6 rupees. ये 10% से RDR को अगर मैं जीरो कर दूं, आप 6 रुपए कमाते, अभी आप 5 रुपए कमा रहे हो, तो आप कहते कि मेरे को जीरो रखना है. अब देखते हैं what if the RDR was zero. अगर रिजर्व डिपॉजिट रेट जीरो होता तो क्या होता? I would have, this is the bank, I am the depositor of the bank. मैंने आज डिपॉजिट किए बैंक में 100 रुपीज. टुमारो आई वेंट टू द बैंक एंड सेड आई वांट टू विथड्रॉ 50 रुपीज. बैंक सेज आई डोंट हैव द मनी. बैंक कहता है मेरे पास पैसे नहीं है. मैं तो हाहाकार मचा दूंगा वहां पे कि वेयर इज माय मनी गॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस न्यूज वुड स्प्रेड इन द एंटायर मार्केट दैट दिस बैंक, लेट्स से एक्सिस बैंक, इज नॉट एबल टू पे बैक इट्स डिपॉजिटर्स or is not able to pay back its depositors fully. The moment this happens, every depositor of this bank would run to the bank कि मेरे पैसे वापस करो, कहां है मेरे पैसे? This situation of every depositor running to the bank to extract its money is called bank run. Situation of bank run. Why is this bank run occurring? ये bank run की situation अकर क्यों कर रही है? ये बैंक रन की सिचुएशन इसलिए अकर कर रही है बिकॉज द बैंक वाज अनेबल टू पे बैक वन डिपॉजिटर एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एवरी अदर डिपॉजिटर आल्सो रैन टू द बैंक. दिस इज द सिचुएशन ऑफ बैंक रन. नाउ थिंक अबाउट इट. बैंक रन होते ही व्हाट हैपेंस? आवर ट्रस्ट इन द इकोनॉमिक सिस्टम विल रिड्यूस. इन द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल. बैंक पे तो कम होगा ही, इकोनॉमी में भी तो कम होगा कि यार मैंने पैसे रखे थे सेविंग्स अकाउंट में, क्या फायदा, कैश ही रख लेता. Even in the economic system, the whole banking system, your trust will reduce. ये बैंक तो चलो जला देंगे लोग, but the trust in the entire banking system will also reduce, right? Whose responsibility is it to maintain this trust? It is the RBI's responsibility to maintain this trust. RBI's primary objective is trust, right? So RBI is the one who decides the reserve deposit ratio. This reserve deposit ratio is decided by the RBI, not by the bank itself. बैंक अगर खुद डिसाइड करेगा तो ये जीरो कर देगा इसको. So banks don't decide their reserve deposit ratio. RBI decides their reserve deposit ratio because reserve deposit ratio is directly related to your trust in the economy. Is this clear? Logical है, रटना तो नहीं पड़ रहा. Now, what is the RBI's job? RBI's job overall is to maintain trust. RBI's job is secondary. Under this trust, RBI is to maintain inflation low, and RBI has to, within this framework of inflation, पहला target inflation control में है तो growth है ना. अब inflation का tolerable band है 4 ± 2%. What are the tools that RBI has to do this job? Monetary policy. Monetary policy is simply controlling the money supply. Money supply depends on two things. One is money multiplier. Money multiplier was multiplication of money in the banking system. Or M0. M0 is simply high powered money. High powered money was notes that RBI prints and enters into the economy. याद करो कल का एग्जांपल. जब तक वॉल्ट में 10,000 रुपए पड़े हैं, they are not high powered money. When they enter the economy, when RBI purchases an asset, then it is high powered money. Right? याद करो कल 10,000 से 20,000 किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में. Now,
So RBI can choose to either control this or RBI can choose to control this, either one or two. If they control one, they get to control the money supply. If they control two, they get to control the money supply. इन्हीं दो चीजों को कंट्रोल कर सकता है. So either it can put money into the system itself or control this multiplication factor. This multiplication factor was directly dependent on reserve deposit ratio. This reserve deposit ratio, because of trust, RBI controls. So broadly speaking, RBI can do two things. One, it can inject more money into the economy itself, or it can control this reserve deposit ratio, which will then figure out this money multiplier factor. समझ आई बात? ये बात क्लियर है? RBI can either choose to control this or choose to control this through. How will RBI control this? Through reserve deposit ratio. How will RBI control this? Directly putting more money into the system. Clear है? Now, अब I am sure that most of you have read this topic before, because most books में ये topic शुरू में होता है. I am sure most of you have read. जिन्होंने पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहे हैं उन्होंने तो नहीं पढ़ा होगा, but most of you have read this topic before, है ना? Quantitative monetary policy, qualitative monetary policy, what are the tools, CRR, SLR, SDR, right? Standing deposit facility, marginal standing facility. Most of you have read this topic. I am also sure that most of you have mugged this up. आप में से ऑलमोस्ट सबने इसको रट रखा है, राइट? या आपने वो 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन खेल रहे हो अपने ब्रेन के साथ कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना? राइट? आज हम ये रटना खत्म कर देंगे. टुडे नो मगिंग फ्रॉम टुडे. ठीक है? बस एक चीज आपको समझनी है, उसके बाद दिस टॉपिक विल बिकम अ केक वॉक. मैं बनाता हूं ग्राफ फॉर द इकोनॉमी. ग्राफ फॉर मनी इन द इकोनॉमी. ग्राफ फॉर मनी इन द इकोनॉमी. डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ऐसा ही बनता है ना? है ना? सप्लाई ऑफ मनी, ये जो लाइन है ये सीधी क्यों है? इस केस में सप्लाई ऑफ मनी की लाइन सीधी क्यों है? Why is this line vertical? We have read this logic. Because RBI is not a profit making body. RBI's objective is not to make profit. Therefore, this line is straight. This is supply of money in the whole economy. Iska price elasticity of supply is zero. That is correct. But why is price elasticity of supply zero? Because RBI does not care what the price of money is when it is controlling this money supply. It has other things to care about. Other things to care about like growth, like inflation, etc. Now, I will make a different graph. Let's try to make the graph for an individual bank. Now, an individual bank is a profit-making entity. This is a profit-making entity. If interest rates on lending, अगर आज लोन 10% पे मिलता है और कल लोन 20% पे मिलने लग जाए, this bank will lend more. This bank is a profit-making entity. Individual bank, Axis Bank मान लेते हैं, या बार-बार एक्सेस को बर्बाद कर रहा हूं, ICICI मान लेते हैं. ICICI Bank is a profit-making entity. ICICI Bank wants to make profit. ICICI Bank wants to make profit on the loans it gives out, right? There is a supply of loanable funds that ICICI Bank has. From what we know so far, what are loanable funds? How would you define loanable funds from what we know so far? Loanable funds are simply deposits minus reserve. जितनी डिपॉजिट्स हैं
उससे आप रिजर्व्स हटा दो, दैट आर द लोनेबल फंड्स दैट दिस बैंक हैज, राइट, माइनस रिजर्व्स. आरडीआर इज रेशियो, वो रेशियो है, रेशियो का वो डिफरेंट होगा, बट यू गेट द आइडिया. डिपॉजिट माइनस रिजर्व इज लोनेबल फंड. दिस लोनेबल फंड इज व्हाट Axis Bank or ICICI Bank would like to lend out. If the interest rate on lending, increases, if the price of loans increases, they will want to lend out more loans. मान लो आज होम लोन 10% पे है, कल 20% पे हो जाए, तो कहेंगे यार और लोन्स करते हैं, कहीं से भी डिपॉजिट लाओ, गेट डिपॉजिट फ्रॉम एनीवेयर, आई वांट टू लोन आउट. ये बात सही है. They will say get deposits from anywhere, मुझे बस लोन भेजना है क्योंकि मेरा प्रॉफिट इससे बन रहा है. फोन आने लग जाएंगे बैंक से, आते होंगे आपको फोन कि सर सेविंग्स अकाउंट खोलना है, सर फिक्स डिपॉजिट खोल लो सर प्लीज. यू माइट बी गेटिंग दीज फोन कॉल्स व्हेन दिस लोन फंडिंग इज हाई, व्हेन लोन प्राइसेस व्हिच आर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स आर हाई, पीपल विल वांट दिस, राइट. दिस इज क्लियर. You want a loan, you are the person who is demanding a loan. Your demand of a loan also depends on price. अगर मान लो आज 0% पे लोन मिले कार का तो आप ले लोगे, अगर 100% पे मिले तो आप नहीं लोगे, है ना. So your loan demand, you are the person who is demanding this. Your loan demand is directly or inversely proportional to price. सेम डिमांड एंड सप्लाई. मैंने आपको कहा था इस ग्राफ से पूरी इकोनॉमी पढ़ी जा सकती है. दैट इज व्हाई आई स्पेंट सो मच टाइम teaching you these laws, because now everything we will understand from these laws. I promised you this. This was a liability. For that liability is the asset of the first few classes when we made these graphs. ठीक है. So if I am making a graph for an individual bank, for an individual bank, this graph will look very different. This will be price. Price is the interest rate on lending. Interest rate on lending. Quantity will be quantity loaned out. प्राइस क्वांटिटी ग्राफ बनाते हैं. प्राइस क्या है यहां पे? इंटरेस्ट रेट ऑन लेंडिंग. क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी लोन्ड आउट, कितना लोन गया. This will depend on two things. One is the demand for money. This is demand for loanable funds. DLF. Demand for loans या demand of loanable funds. DLF. Then there is this. This is supply of loanable funds. Supply of loanable funds. How much loanable funds the bank is willing to loan out. Right? This graph we are fairly comfortable with. अब बस इसको शिफ्ट करेंगे और पूरी मॉनेटरी पॉलिसी खत्म कर देंगे. समझ आई बात? डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. क्लियर? यही बनेगा ना ग्राफ. व्हाट शुड आई राइट हियर? इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स. What should I write here? Quantity of money loaned out. ठीक है, ये क्लियर है? शुड बी क्लियर. अब तो इसमें तो अब बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए आप लोग नाउ, है ना. मनी सप्लाई का ग्राफ डिफरेंट था, वो आरबीआई लेवल पे था. ये लोनिंग पे ग्राफ है ऑफ एन इंडिविजुअल बैंक बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, है ना. कुछ डाउट नहीं अभी तक. अब who controls the RDR? RBI controls the RBR. Let's say RBI says we are reducing the RDR. We are reducing the RDR, the amount of reserves that you need to keep. Earlier we needed to keep 10% reserves. From 10% we are making it 5%. What happens to this graph? What happens to this graph now? क्या शिफ्ट करूं मैं इस ग्राफ में अब? Because reserve ratio has decreased, because reserve, very good,
I am proud of you if you are giving the right answer. मेरे explain करे बिना भी. Reserve ratio has decreased, so the supply of loanable funds has increased. When the supply of loanable funds have increased, I need to shift this graph outside and say supply of loanable funds 1. The interest rate on loans, the interest rate on loans has higher equilibrium, reduced. Quantity of loans has QL1 increased. Because of this decision of RBI to reduce, the decision taken by RBI was reduce the RDR. Reducing RDR led to interest rates falling and quantity of loans increasing. Right? Quantity of loans increasing means more people are borrowing. More people are now borrowing, है ना? ज्यादा लोग borrow कर रहे हैं. More loans are there in the market, interest rates are lower, and more loan people are borrowing. What effect will this have on consumption and investment? What effect will this have on consumption or investment? Consumption investment पे क्या effect होगा इससे? बढ़ेगा या कम होगा? Increase both. So that means aggregate demand curve will shift outward. है ना? With me so far? When aggregate demand curve will shift outward, what will happen? AD1, price levels in the economy will increase, output of the economy will increase. है ना? अब देखो, what has the RBI done here? RBI has controlled what factor? What has the RBI controlled? RBI has controlled money multiplier. RBI has controlled money multiplier. How has RBI controlled money multiplier? Through controlling this. This is a direct determinant of money multiplier. RBI has controlled money multiplier. By controlling money multiplier, RBI increased the loanable funds. By increasing the loanable funds, there was greater aggregate demand leading to inflation. समझ आ गई बात? RBI has now caused inflation. ऐसे ही RBI inflation control भी कर सकता है इसका उल्टा करके. अगर RBI कहता कि we are making this reserve deposit ratio from 10% to 20%, तो क्या होता? ये supply of loanable funds inward shift हो जाती, SLF2. सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स जब इनवर्ट शिफ्ट हो जाती तो क्या होता? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होते. कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज होते तब क्या होता? एग्रीगेट डिमांड वुड हैव शिफ्टेड इनवर्ड. एग्रीगेट डिमांड इनवर्ड शिफ्ट हो जाती. प्राइस लेवल्स वुड हैव फॉलन, ग्रोथ वुड हैव स्लोड डाउन, एंड आरबीआई वुड हैव मैनेज्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन थ्रू कंट्रोलिंग द मनी मल्टीप्लायर. ये दोनों ग्राफ समझ आ रहे हैं? बहुत लॉजिकल है, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है ना? कुछ भी रटने का नहीं है इसमें. We have understood everything through graphs, so this is also very easy to understand now. Of course, unemployment will also be affected, growth will also be affected. We know all of this. तभी there is an inflation growth trade-off. बस chapter खत्म, class over. जाओ. We are done. Actually, we are actually done. If you have understood this, we are done. ठीक है? Now, controlling money supply is monetary policy. Monetary policy can be used to control either this or control this. Right? This M is money multiplier. This is high powered money. Tools of monetary policy. There are two types of tools. Types are of various types. Types मैंने आपको बोला था. Types can be categorized as reasons or various thinking. एक तरह की typology है
एक तरह की टाइपोलॉजी है कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वालिटेटिव टूल्स. टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वालिटेटिव टूल्स. Quantitative tools are those whose effect can be quantified. Quantified means I can measure. I can measure quantification. I can measure how much this is happening. Quantified. Qualitative tools are I cannot quantify. मैं measure नहीं कर पाऊंगा. This is qualitative tools. Quantitative is I can I can quantify this. I can quantify what is going to be the effect. Qualitative is I can only see the quality, I will not be able to exactly measure. अब इन दोनों तरह के टूल्स हम पढ़ते हैं. पहले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स. थिंग्स आई कैन क्वांटिफाई, थिंग्स आई कैन मेजर. I know that money supply in the economy is equal to M into M naught. Both these obviously can be quantified. इनको तो मैं मेजर कर ही सकता हूं. हम यही देख रहे हैं कल से, how to measure these things, right? RDR के बेसिस पे, M naught हम देखते हैं एसेट लायबिलिटी के बेसिस पे. इस पे अगर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा तो वो मेजरेबल होगा, राइट? आरबीआई कैन चूज ईदर टू कंट्रोल दिस और टू कंट्रोल दिस, है ना? पहले ये देखते हैं व्हाट इफ आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल दिस. इसका एग्जांपल देखते हैं. आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल एम नॉट, तो क्या होगा? हु डज आरबीआई नॉर्मली डील विद? आरबीआई नॉर्मली डील्स विद व्हाट? हु डज आरबीआई नॉर्मली डील विद? आरबीआई नॉर्मली डील्स विद प्राइमरी डीलर्स. आरबीआई नॉर्मली डील्स विद प्राइमरी डीलर्स, राइट? बैंक्स नहीं यार, प्राइमरी डीलर्स. प्राइमरी डीलर्स कल पढ़ा था हमने ये. बैंक इज अ प्राइमरी डीलर. बैंक इज अ प्राइमरी डीलर, बट देयर कैन बी अदर्स ऑल्सो. गवर्नमेंट के साथ भी तो आरबीआई डील करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डील करता है. आरबीआई डील्स विद प्राइमरी डीलर्स नॉर्मली. RBI wants to increase this number. RBI wants to increase this number. This number is liability of RBI or not? याद होगा आपको, ये तो करेंसी नोट्स हैं. This is liability of RBI, right? This is liability of RBI. Liability of RBI. If RBI wants to increase its liabilities, RBI wants to increase its liabilities, it will have to also increase its assets. अगर लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो एसेट इंक्रीज करने पड़ेंगे. एसेट के अगेंस्ट ही लायबिलिटी होगी, और तो कोई तरीका नहीं है. नाउ इन द ओपन मार्केट देयर आर पीपल लाइक यू एंड मी. यूजुअली आरबीआई डज नॉट डील विद यू एंड मी. यूजुअली आरबीआई डज नॉट डील विद यू एंड मी. अब हम दोनों से बात आरबीआई जनरली नहीं करता. In the open market, RBI, for increasing this M naught, can say to us that I will purchase your assets. I will purchase your assets and give you money. I will purchase your assets and give you money. मैं आपके assets purchase करूंगा और आपको money दूंगा. ये कह सकता है. What will be the net effect of this transaction? The net effect of this transaction will be that RBI from the open market, RBI is taking assets, RBI is giving liabilities. Liability of RBI here is M naught or money simply. Asset here can be, let's say, government bonds. RBI कहता है मैं आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करूंगा और मैं आपको मनी दूंगा. Money in the market has now increased. Money supply has increased. Why has money supply increased? Because M naught has increased. RBI has taken asset and given me currency. When RBI has taken asset and given me currency, this
currency given by RBI is M naught. Now money supply has increased. Now money supply is increased. Clear? समझ आ रही है बात? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, right? When money supply has increased, why has this money supply increased? This money supply has increased due to open market operations of the RBI. RBI has operated in the open market. From normal, RBI is now operating in an extraordinary situation in the open market. Due to this open market operations, RBI is able to increase the money supply. RBI can reduce the money supply also. Similarly, RBI can reduce the money supply. RBI starts selling its government securities. उल्टा कर ले RBI, अपनी government securities मुझे बेच दे. RBI says we will sell you government securities and we will take from you money. If RBI takes money from me from the open market, money in the open market reduces and money supply will also reduce. So one way of the RBI controlling money supply is open market operations. RBI can operate in the open market, buy and sell government bonds and control money supply. Clear? Any doubt here so far? Fairly obvious होना चाहिए. ये टॉपिक बहुत लोग, मैं आपको धीरे जान के इसलिए पढ़ा रहा हूं because this topic lot of questions come and 99.9% people have mugged this topic up, including me. I had also mugged this topic up till I did my diploma and understood कि ये होता क्या है. ठीक है? I hope this is clear so far. है ना? ठीक. Now एक बार देख लेते हैं नोट्स में. Quantitative tools. First is I can change M naught. In M naught, RBI can buy and sell assets in the open market. What asset are we talking about here? Government bond. Government bond is this asset. RBI can buy asset and give money. Money supply will increase. RBI can take money and sell assets. Money supply will decrease. है ना? This was the effect RBI can have in this formula. MS is equal to M into M naught. RBI can affect this first. Now let us see how RBI affects this. This is purely a function of banking. This is purely a function of banking. पहले केस में हमें वो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का ग्राफ बनाना जरूरी नहीं था बिकॉज आरबीआई ने इस फंक्शन को इंपैक्ट किया है, इसको इंपैक्ट नहीं किया है ना. ये तो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंकिंग, दिस इज अ फंक्शन ऑफ बैंकिंग. नाउ वी विल सी हाउ आरबीआई अफेक्ट्स दिस. नाउ वी विल सी हाउ आरबीआई अफेक्ट्स बैंकिंग. इफ बैंकिंग इज अफेक्टेड, नाउ वी विल रिलेट दिस. मेजरली हमारे क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं. We will relate this to this graph. I am making this graph here. We will relate this now to the banking graph. RBI is affecting the banking. तो सब कुछ हम इस ग्राफ से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमें रटना ना पड़े. Price here is loan interest. Quantity here is loan amount. है ना? Now, obviously, we have read M is inversely proportional to cash deposit ratio. M is inversely proportional to reserve deposit ratio. Can banks change cash deposit ratio? Yes or not? Can banks change the CDR? Yes or no? Can banks change the CDR? Yes or no? Obviously not. This is a behavioral measure depending on various things in the economy. Indirectly they might be able to. Indirectly के मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो शायद लोग डिपॉजिट ज्यादा कर ले. They can influence the CDR. They cannot change the CDR. है ना? They can influence it. They might be able to influence a behavioral parameter. Influencing does not mean ability to change. Influencing does not mean ability to change. ठीक है?
Now, before we understand this RDR, कि ये actually how does it play out, its actual ramifications, before we understand this, we need to understand a different concept called net demand and time liabilities of a bank. I'll write this here. Net demand and time liabilities of a bank. We need to understand this term. ये डिमांड एंड टाइम कल आपने पढ़ा था. डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट इज व्हाट? डिमांड डिपॉजिट इज व्हाट? लायबिलिटी ऑफ बैंक. What sort of accounts are there here? Current account, savings account. Time deposits, this is also a liability of the bank. मतलब fixed deposit and recurring deposit. Now there is one more word here which is net. ये word भी हमने पहले देखा है. ग्रॉस डिपॉजिट्स, जितनी भी टोटल डिपॉजिट्स होंगी उसमें से कुछ माइनस होगा. Only then we will get to net deposits. Something will get minus, है ना? कुछ subtract करना पड़ेगा तभी हम net पे पहुंचेंगे. Let us now understand what we are subtracting here. ठीक है? This is Axis Bank. This is ICICI Bank. ICICI Bank gets deposits of rupees 1000. ICICI Bank gets loan demand of rupees 800. Reserve deposit ratio is 10%. From this 10%, of course, it means that they will keep 100 rupees in reserve. है ना? They will keep 100 rupees in reserve. Now they still have 100 rupees left. डिपॉजिट्स आई 1000 रुपए की, लोन दिया 800 रुपए का, रिजर्व रखा 100 रुपए का, अभी भी 100 रुपीज लेफ्ट. नाउ दिस 100 रुपीज लेफ्ट विद आईसीआईसीआई बैंक. दे आर ट्राइंग टू सेल द लोन इन द मार्केट. वो लोन को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनीवन हु इज डिमांडिंग दिस लोन. नोबडी वांट्स दिस लोन. व्हाट इज the options now available with ICICI Bank? क्या option available है ICICI Bank के पास? One simple option available is put this in Axis Bank and make a deposit. If they don't do this, तो क्या होगा? इस 100 पे they will earn no money. इस 800 पे they are earning money. इस पे they are earning. इस 1000 पे दे हैव टू पे. इस 100 पे दे आर नॉट अर्निंग, और वी विल सी वेदर दे आर अर्निंग और नॉट. वन वे इज टू डिपॉजिट दिस इन अदर बैंक, राइट? नाउ फॉर एक्सिस बैंक, it will also have some deposits, it will also have some loans. This deposit from ICICI to Axis is called interbank deposit. Between banks, right? Interbank deposits. This we will not count. This is what we have to subtract. So gross deposits minus interbank deposits is net deposits. So when I am counting the net demand and time liabilities of ICICI Bank, I will not look at this figure. When I am counting net demand and time liabilities of Axis Bank, I will not look at this figure. I will ignore this. This I will not count. I will just count this to count their net demand and time liabilities. Here also I will just count this. Whatever public has deposited will be counted. Right? और ये logical भी है. I'll tell you why this is logical. थोड़ा सोचोगे तो समझ भी आ जाएगा.
Why am I keeping a reserve deposit ratio? So that public maintains trust in banking system. So I have to count public deposits only. Why should I count bank deposits? So I will count public deposits only. But if I look at the balance sheet of Axis Bank, अगर मैं Axis Bank की balance sheet देखूं, and I simply read how many deposits do you have, this balance sheet will count all deposits from public, deposit from other bank also. ये अदर बैंक वाली मैं हटा दूंगा. दिस इज द ग्रॉस डिपॉजिट. आई ओनली वांट टू सी दिस. So I will say from gross deposits subtract interbank deposits and get to net deposits. Net deposits, which type of deposits? Demand deposits, which are demand liabilities. Time deposits, which are time liabilities. From this I will calculate the net demand and time liabilities of the bank. Net demand and time liabilities of a bank. Bank will give me balance sheet saying I have gross deposits of 1000 rupees. I will say remove the interbank deposits from this. Bank will say okay, now my net deposits are 800 rupees. I will say now on this net figure of 800 rupees, now I will calculate the reserve deposit ratio. This is a ratio ना. रेशियो मतलब किसी चीज पे कैलकुलेट होगा. 10% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 5%. क्लियर सो फार? समझ आई है कॉन्सेप्ट? आई नो आपको डाउट आ रहा होगा कि अगर बैंक ने आरबीआई में डिपॉजिट करा तो क्या होगा. मुझे पता है ये डाउट आएगा. रुक जाओ, वी कांट स्टडी एवरीथिंग एट वंस. वी विल स्टडी दिस टुडे ओनली. अभी मैंने आरबीआई की बात नहीं करी है. समवन सिंह सर ये भी क्राइम कर रखा था. रट्टा मारने का नहीं है इसमें कुछ. रट्टा नहीं मारने का अपने को, है ना, ये करना है. समझ आई बात? So I will calculate the reserve deposit ratio. My reserve deposit ratio will be calculated on net demand and time liabilities. Certain percentage of this you need to keep as reserve. So certain percentage of this you need to keep as reserve. ठीक है. अभी मैंने आरबीआई की कोई बात नहीं करी है, सो नो नीड टू गेट टू आरबीआई येट. अभी ये इंटर बैंक डिपॉजिट्स की बात हो रही है. सिंपली all my gross deposits, gross time and demand deposits minus net time and net deposit minus interbank deposits will give me net demand and time liabilities of the bank. ठीक है. Now I will calculate RDR. मैं कहां पे छोड़ा एक्चुअली, यहीं पे छोड़ते हैं. I will calculate RDR as a percentage of net demand and time liabilities. NDTL के परसेंटेज से मैं RDR कैलकुलेट करूंगा. ठीक है. Now let's take a break for 2 minutes. I'll just come. ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. I'll come back and यहीं से कंटिन्यू करेंगे. I hope अभी तक कोई डाउट नहीं है. I am deliberately going slow because lot of questions are asked here. By the time this class ends, you will not have any doubt in this topic. 3 मिनट ब्रेक ले लेते हैं. I'll just be back.
Okay, let's continue. Now, now let us read the actual forms of reserve deposit ratio. Reserve deposit ratio is a concept. How is RDR applied in the Indian economy? Now we will see that. Okay. RDR in the Indian economy is applied in two forms. One is cash reserve ratio, one is SLR. पहले कैश रिजर्व रेशियो देखते हैं, फिर SLR देखेंगे. Cash reserve ratio. RBI says to bank that some percentage of NDTL, some percentage of your net demand and time liability, you must keep in the form of currency with the RBI. Some percentage of your net demand and time liabilities you must keep as currency in RBI. Right? Now, banks can also keep deposits in RBI. ये हम अभी देखेंगे. We will just see this also. But हमने RBI की बैलेंस शीट में देखा था कि बैंक might keep some deposits in RBI. We have read this कि बैंक डिपॉजिट रख सकता है आरबीआई के अंदर. दिस इज नॉट कैश रिजर्व रेशियो. ये सीआरआर नहीं है. सीआरआर इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. ये हमने देखा था कि आरबीआई की बैलेंस शीट में इन बैंक की डिपॉजिट्स भी लिखी थी. दिस इज नॉट सीआरआर. सीआरआर इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. आरबीआई इज द मार्केट रेगुलेटर. आरबीआई regulates the banking sector. RBI regulates the banking sector, and this is a regulatory requirement of the banking system. To become a bank, you must agree to this regulation. Right? Now, if bank keeps a deposit with RBI, RBI should pay interest to this bank. If a bank keeps deposit with RBI, RBI can keep interest. RBI can pay interest to the bank, has to pay interest to the bank. जैसे इंटर बैंक डिपॉजिट्स की कहानी थी. बैंक अगर एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक में डिपॉजिट रखे तो एक्सिस बैंक इंटरेस्ट देगा. बैंक अगर आरबीआई में डिपॉजिट रखे तो आरबीआई इंटरेस्ट देगा. बट सीआरआर इज नॉट दिस. दिस इज नॉट सीआरआर. CRR is merely a regulatory requirement. टेक्निकली बात सेम है. टेक्निकली बैंक कुछ पैसे रख रहा है आरबीआई के पास, राइट? बट यहां पर डिफरेंस क्या है? बैंक कीप्स CRR with RBI. RBI does not pay any interest here. Because ये आपने, this decision you have taken out of your free choice. आपके पास चॉइस है, आप रखना है डिपॉजिट रखो, यहां रखना है कहीं और रखो, आपकी मर्जी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा. दिस इज नॉट अ चॉइस. यहां पर ऑप्शन नहीं है. दिस इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. टू बी अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम you must agree to this regulation. Therefore, RBI will not give any interest on CRR. CRR is mandated. This provision of CRR, cash reserve ratio. Why cash? Because it is kept in the form of cash. It is kept in the form of cash only with the RBI. आपको कुछ कैश आरबीआई के पास रखना पड़ता है, राइट? This is mandated. This is written. ये प्रोविजन कहां से आया? This is written in the RBI Act of 1934. RBI Act of 1934. इसमें लिखा है इन सेक्शन 42. ये आरबीआई एक्ट का ही स्क्रीनशॉट है, राइट? आरबीआई एक्ट का ही स्क्रीनशॉट है. कैश रिजर्व्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स टू बी केप्ट विद द बैंक. बैंक यहां पर मींस आरबीआई. कैश रिजर्व्स ऑफ scheduled banks. What are scheduled banks? We will see tomorrow.
to be kept with RBI, right? Now what is going to be the percentage of CRR? कितना CRR RBI आपको मैंडेट करेगी, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है? This percentage will be calculated on net demand and time liabilities. Some percentage of NDTL will be there. This RBI changes from time to time. From time to time, RBI will increase or decrease the CRR. When RBI will increase or decrease the CRR, you will have to keep more cash or less cash with the RBI. ठीक है? Currently, this level is close to 3.5%. Now, it's actually 4% now. 4%. It stays in this range. 3.5, 4, 4.5 इसी रेंज में रहता है. But there is no limit. RBI चाहे तो इसको 100% भी कर सकता है, करेंगे नहीं obviously. But there is no limit to this. इस पे कोई भी लिमिट नहीं है. RBI चाहे तो इसको 100% कर दे, चाहे तो 0% कर दे. It is completely as per RBI, written in RBI Act 1934, Section 42. ठीक है? Now imagine what happens when RBI. I'll just see what the slide number is. 8. Okay. This is not the slide number. Yeah, 10. What happens when RBI increases the CRR? Now calculate all the effects of RBI increasing CRR. अब ये आपका काम है, 1 मिनट का टाइम है. RBI ने CRR इंक्रीज किया. Change this graph now. Change this graph now as per RBI's effect of increasing CRR. अब ये काम आपका है. युता, आपने जल्दी जवाब दिया और आपने गलत जवाब दिया. आप सोच के ग्राफ बनाओ ना. ग्राफ बनाओ, आपको आता है कंसेप्ट, है ना? आपको कंसेप्ट आता है, आप पढ़ चुके हो सब ये सब. As the CRR increases, the loanable funds, the supply of loanable funds will decrease. Supply of loanable funds will decrease. Loan interest will go up. Loan interest will go up. Loan amount will go down. Loan amount will go down. It is now more costly. It is now more costly to take loans. For me, as a consumer, अगर मैं लोन लेना चाहूं, लेट्स से कार खरीदने के लिए, अगर CRR RBI बढ़ा देगा, मेरे लिए लोन लेना ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा. राइट? Consumption will reduce, investment will reduce, aggregate demand will reduce, inflation will come down. Inflation will come down. Clear? Clear? सब कुछ क्लियर हो गया इससे? कुछ रटा हमने? कुछ भी नहीं रटा ना? ठीक है. I will just reset this now. First effect we have seen of RBI increasing the CRR. This we have seen. RBI decreasing the CRR will have opposite effect. ठीक है? RBI increase CRR, RBI decrease CRR, opposite effect will happen. I can see effect on inflation, I can see effect on growth, I can see effect on unemployment. Anything I want to see, I can see from here. है ना? I hope this looks jadui to you also. Yeah, देखो, if you ask me to repeat in the chat, it is not possible because see, I can see most people are understanding. है ना? आपके पास recorded video है, आप एक बार दोबारा देख लो. I don't think I'm going fairly slow. है ना? I'm going fairly slow. बिल्कुल एक step by step logical process है ना? अब high CRR, low lendable money, low supply of loanable funds is down. Money supply also becomes lesser. Low CRR,
सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इंक्रीजेस, मनी सप्लाई इंक्रीजेस। मनी सप्लाई का भी ग्राफ देख सकते हैं और लोनेबल फंड्स का भी देख सकते हैं। कैसे ही देख लो, सिंपल लॉजिकल प्रोसेस है, रटना कुछ नहीं है। दिस इज ऑफ 6 दिसंबर 2024, इसी महीने की न्यूज है। RBI slashes cash reserve ratio to 4%. It was 4.25%. RBI made it 4%. What it means for banks and you? Now you know. इसीलिए सिर्फ हेडलाइन रखिए, बाकी तो आप खुद बता दोगे what it means for banks and you. अब न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं। एक लाइन पढ़ लेते हैं। CRR reduction will release 1.16 trillion into the banking system, providing additional liquidity and enable banks to extend more loans. Of course, banks have more cash, they have more liquidity, they can extend more loans, they can give more loans, right? इतनी अब हेडलाइन से आगे पता है आपको। Now you don't need business standard to explain to you, है ना? और आप ग्राफ भी बना दोगे, राइट? चलो, दिस इज द ट्रेंड ऑफ CRR इन इंडिया। ठीक है, अगर आप देखोगे इन रिसेंट ईयर्स इट हैज स्टेड क्लोज टू 4%। लास्ट 10 ईयर्स बिटवीन 3 and 5% इट हैज स्टेड। ये ट्रेंड रहा है, बीच में हाई हुआ था, लो हुआ था। दिस टाइम वी डोंट नीड टू सी, ये हमें देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत पुराना टाइम है। ये टाइम देखते हैं, ये रिसेंट है, दिस इज फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स। इन द पास्ट 12 ईयर्स इट हैज स्टेड इन दिस रेंज ऑफ 3 to 5%, है ना? ठीक है, नाउ the second way in which reserve deposit ratio is implemented is SLR. Now, पहले answer a question for me. On CRR, is bank earning anything? बैंक की अर्निंग है इस पे कुछ भी, किसी भी तरह की अर्निंग है इस पे? नहीं है ना। अगर मैं CRR ज्यादा करूं, अब लॉजिकली सोचते हैं, हमें ये बात पता है वैसे, वी हैव ऑलरेडी मेड द ग्राफ फॉर दिस, बट वी कैन थिंक अबाउट दिस लॉजिकली आल्सो। मान लो मैं सारा रिजर्व डिपॉजिट रेशियो CRR के थ्रू इंफोर्स करने की कोशिश करूं, तो अब क्या हुआ, बैंक्स के पास 100 रुपए आए, मैंने CRR कर दिया 20%। 20 पे दे विल नॉट अर्न एनीथिंग, 80 दे विल लोन आउट, 80 पे दे विल अर्न, 80 पे when they will earn on 80, they have to pay interest on, बैंक को पे किस पे करना है, 100 पे, अर्न किस पे करना है, 80 पे, अर्न 80 पे करना है, पे करना है 100 पे, राइट? CRR इज 20%। अब मैं क्या करूंगा, आई विल हैव टू मेक मोर इंटरेस्ट ऑन 80, मुझे 80 पे 10% इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा, ताकि मैं 100 पे 4% इंटरेस्ट दे सकूं, मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, राइट? सो नाउ इफ आई कीप वेरी हाई CRR, अगर RBI CRR 20% रख देगा, the cost of loans should become more expensive. Banks will make loans more expensive. That is exactly what we derived on the graph. हमने ग्राफ पे भी तो यही डिराइव किया था, ना, ये इधर हो जाएगा और लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। If I increase the CRR, लोन इंटरेस्ट रेट will increase. और लॉजिकली भी बात क्लियर लग रही है, ठीक है? Now think from RBI's perspective. 4% is not enough. 4% is not enough to ensure 4% is not enough to ensure कि पूरा बैंक रन कभी भी ना हो। 4% is not enough to ensure कि बैंक रन कभी भी ना हो। I need a higher reserve. But if I do it through CRR, it will have a huge impact on loans. Loans will become very, very costly. So RBI says, let's find a middle path, some type of reserve where you can make some earning. Obviously, this earning will not be as great as loans. Loans से सबसे ज्यादा earning होगी, but कुछ इस टाइप का रिजर्व देख लेते हैं, where you will have at least some earning. Now, what is the point of reserve? Reserve is there कि लोग अगर कैश मांगने अपना आ गए, if people come back to ask for their deposits, you should have the money to give to them.
यू शुड हैव द मनी टू गिव टू पीपल, ताकि बैंक रन ना हो। रिजर्व का पूरा पॉइंट था कि बैंक रन ना हो। नाउ यू नीड समथिंग वेयर बैंक इज हैविंग सम अर्निंग, ताकि इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन पे बहुत ज्यादा ना पड़े, राइट? सम अर्निंग भी हो, बट इट नीड्स टू बी लिक्विड ऑल्सो। इट नीड्स टू बी अ फेयरली लिक्विड फॉर्म ऑफ रिजर्व। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैंड में आपने रिजर्व रख लिया। लैंड इज नॉट लिक्विड। आप पहले प्रॉपर्टी बेचोगे, साइन करोगे, वो स्टैंप ड्यूटी भरेंगे, फिर ट्रांसफर आएगा, सिर्फ पैसे मिलेंगे। इस टाइप की चीज होनी चाहिए जो लिक्विड भी हो और कुछ अर्निंग भी करती हो। इट डज नॉट हैव टू बी कंप्लीटली लिक्विड, क्योंकि ये है ना कंप्लीटली लिक्विड, ये तो कैश है ही। जब तक ये है, पूरी तरह लिक्विडिटी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड इट टू बी 100% लिक्विड, कैश की जरूरत नहीं है, but fairly liquid. It should be easy to convert this into cash when I need it. This is the statutory liquidity ratio. Logic of SLR is clear कि बैंक कुछ कमा भी ले, हो भी लिक्विड, बिल्कुल 100% लिक्विड भी ना हो, उसके लिए यह है। लिक्विड भी हो लेकिन बैंक कुछ कमा भी ले, बैंक को इतना नुकसान भी ना हो। क्लियर? दिस इज statutory liquidity ratio or reserve, sorry, statutory liquidity reserve. Now statutory का क्या मतलब है? Anywhere you hear the word statutory, it means it is guaranteed in a law. किसी law में लिखा है। statute is law of the land. CRR was also written in some statute. Which statute was it written in? It was written in RBI Act of 1934. अब SLR देखते हैं। SLR is where will I calculate SLR? I will calculate on percentage of NDTL. SLR must give bank some earning. Some earning भी होनी चाहिए SLR पे, that we have seen. In case of bank run, there should be quick liquidity, not 100% immediate liquidity, but quick liquidity. So conditions are quick liquidity, some earning, some percentage of NDTL. So what does the RBI do? RBI says we will designate certain liquid assets. We will designate certain liquid assets. In these assets will also generate some return for you. We will designate certain liquid assets. These assets will generate return for you and they are fairly liquid also. ये बहुत जल्दी liquid भी हो जाएंगे and these assets will generate return for you also. Can you think of an example like this जो आपकी normal life में है? An asset that is in all of your homes or in most of your homes, that asset is there. It is generating return also and it is very liquid, fairly liquid. Gold. आप आज बेचने जाओगे तो आज ही बिक जाएगा और रिटर्न भी जनरेट कर रहा है ना? इट इज जनरेटिंग अ स्टेडी रिटर्न. गोल्ड इज जनरेटिंग अ स्टेडी रिटर्न. स्टेडी है ना? स्टॉक्स मत बोलो यार, गोल्ड. स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या है? स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, ये लोगों की डिपॉजिट्स हैं, आप खेल नहीं सकते इसके साथ. यू कैन नॉट स्पेक्युलेट विद डिपॉजिट्स. वी विल सी दिस व्हेन वी कम टू कैपिटल मार्केट्स. कैपिटल मार्केट्स पाएंगे तो आपको समझ आएगा. गोल्ड है, यू कैन सेल इट. आप आज जाओ ज्वेलर की शॉप पे, गोल्ड बिक जाएगा, लिक्विड भी है और आपको रिटर्न भी दे रहा है. इट इज गिविंग यू रिटर्न ऑल्सो, राइट? नाउ आरबीआई ने कुछ एसेट्स डेजिग्नेट किए हैं. लेट अस रीड फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, और रादर देन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. एक्ट में का नाम मैं अभी आपको बताता हूं. लेट अस सी व्हाट आरबीआई हैज डेजिग्नेटेड. आरबीआई हैज डेजिग्नेटेड, you can keep this SLR as cash. आप कैश रख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैश रखने में प्रॉब्लम है. विड यू वांट टू, एज अ बैंकर, आप कैश रखना चाहोगे? नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, कोई अर्निंग ही नहीं होगी. रखने को रख सकते हो, बट विल इट अर्न समथिंग? नो. गोल्ड इज अलाउड. Gold will have some earning. You buy some gold today, you will make some money on it later, right? Bond of Government of India.
गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड फेयरली लिक्विड। आपके पास आज अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, यू विल फाइंड अ बायर इन द मार्केट टुडे ओनली। आप आज बेचने जाओगे, आज ही बिक जाएंगे। पीपल वांट टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स। व्हाई? वी विल अंडरस्टैंड दिस आल्सो टुडे, क्यों ये ऐसा होता है। बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर फेयरली लिक्विड, राइट? Treasury bills of government of India. What are treasury bills? We will see. They are similar to government bonds. Similar to government bonds. Okay, we will see this. Government bonds of India, treasury bills, state development loans. Basically, state government के bonds. State government के bonds. ठीक है? This is written in the Banking Regulation Act. राइट? अभी हमने ट्रेजरी बिल्स नहीं पढ़ा है, अभी हमने स्टेट डेवलपमेंट लोन्स नहीं पढ़ा है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स का आइडिया है। बेसिकली दिस सेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और नीचे देखते हैं क्या लिखा है। एनी बैलेंस मेंटेन्ड बाय अ शेड्यूल बैंक विद रिजर्व बैंक इन एक्सेस ऑफ बैलेंस मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इट इज सेइंग एनी मनी दैट यू कीप विद द आरबीआई in excess of section 42 of RBI Act. It is saying that in SLR you can keep money with the RBI, whatever this money is in excess of section 42 of RBI Act. What is section 42 of RBI Act? CRR. Basically, Axis Bank has a CRR requirement of 100 rupees. Axis Bank decides to keep with RBI 150 rupees. Now, 100 is CRR here. The remaining 50 Axis Bank has kept by choice. That means this is a deposit. That means this will have some interest rate earning. This deposit in the RBI, यहां पर डिपॉजिट इतनी ही है बस, क्योंकि ये तो चॉइस नहीं है ना, 100 तो आपको रखना ही पड़ेगा। दिस डिपॉजिट केप्ट इन द आरबीआई। अब समझ आ रहा है? डिपॉजिट्स इन आरबीआई, डिपॉजिट इन आरबीआई काउंट्स एज योर एसएलआर। दिस 50 will count in your SLR and it will have some earning. And it is liquid also. जब आरबीआई मांगेगा, जब आपको चाहिए होगा, आरबीआई आपको वापस दे देगा। So it is liquid also, it has earning also, and it is kept as deposit in RBI, counts in your SLR. Is this clear? Is this clear? ठीक है? Now, these are the various things you can keep in SLR. यहां पे लिखा है, एक बार इसको पढ़ना जरूर। This is given in your notes, अपलोड हो चुके होंगे अब तक, right? What were the conditions being met in the SLR? SLR में क्या हो रहा है? What is happening in SLR? They are fairly liquid. They are having some earning. They are under a statute. The statute here is the Banking Regulation Act of 1949. Banking Regulation Act of 1949. Statute is Banking Regulation Act of 1949. Liquidity is also there. Some earning is also there. Some examples are gold. Some example are you can keep as cash. आप कैश की तरह रख सकते हो, बट आप रखोगे नहीं। You can keep this also as government bonds, or you can keep it as deposit with RBI. एक दो चीजें और हैं, वो जब ट्रेजरी बिल्स और एसडीएल पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है? नाउ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में क्या लिखा है? दैट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ SLR, what the maximum limit of SLR is, ये लिखा है। SLR की maximum limit is 40%. In the Banking Regulation Act is written,
कि SLR 40% से ज्यादा नहीं हो सकता. SLR मैक्सिमम इज 40%. CRR पे कोई लिमिट नहीं है, वो RBI का खुद का डिस्क्रिप्शन है. यहां पर एक लिमिट है ऑफ 40%. ठीक है. नाउ RBI chooses to increase the SLR. What effect is it going to have? %40 of NDTL only. Sir, earlier you said CRR is choice. I have not even once said that CRR is choice. Please hear clearly. Supply of loanable funds will shift inward. What will this lead to? This will lead to one, interest rate increasing, quantity of loans decreasing, money supply decreasing, aggregate demand decreasing, inflation decreasing, growth decreasing, unemployment increasing. सारे समझ आ रहे हैं ना? ग्राफ में पूरा नहीं बना रहा हूं. आई एम अज्यूमिंग यू आर नाउ कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स. इतनी मेहनत इसलिए करी है इस ग्राफ के लिए हमने, ताकि हम ये अब आराम से कर सकें, है ना? जिसने भी आज से पहले SLR रटा था, आई एम श्योर कि आप SLR और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशन नहीं कर पाते, चाहे आप बाकी कर लेते. ठीक है. तो हमने SLR का इफेक्ट देख लिया ऑन दिस ग्राफ. अब there can be a different impact of CRR and SLR, है ना? SLR CRR का डिफरेंट इंपैक्ट हो सकता है, बट इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड टू सी द डिफरेंशियल इंपैक्ट, क्योंकि आज तक नहीं पूछा उन्होंने कि CRR बढ़ाने से होगा या SLR बढ़ाने से होगा. इस टाइप के ऑप्शंस नहीं मिलते. इफ द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी, दे आर गोइंग टू बी ऑपोजिट. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वी डोंट नीड टू नो. ठीक है. अब what is the SLR level? This RBI decides SLR level. SLR level currently in the economy is 20% of NDTL. इसके आसपास ही रहता है. It might be 18.5, अभी हो सकता है शायद 19 है या 18.5 है. 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5. This is the SLR level. But you don't have to remember this level because it changes every 2 months. Every 2 months this level will change. तो आपको ये लेवल याद नहीं रखना, आपको रेंज याद रखनी है that it is close to 20%. जैसे वो close to 4% है, this is close to 20%. So now 24% of net demand and time liabilities are kept as reserve. 20% of NDTL, 4% of NDTL. ठीक है. 20% of NDTL is earning something. 4% of NDTL is earning nothing. Is this clear? This is CRR, this is SLR. Clear so far? समझ आ गई ये बात? Now, SLR का इफेक्ट भी देख लिया हमने. SLR बढ़ाओ तो क्या होगा, SLR कम करो तो क्या होगा. Now, SLR is given in section 24 of Banking Regulation Act, and it says not exceeding 40%. Limit on SLR is there. SLR limit is 40%. RBI 40% से ज्यादा SLR नहीं रख सकता. SLR cannot be more than 40%. Now, अब
Let's get back to banks. Let's get back to banks. हमने अभी तक क्या देखा है? Depositor comes to bank, gives money. Bank keeps some as reserve. Bank then gives out as loan. We have seen this is 1, this is 2, this is 3. In a sequence we have seen these three things, correct? But हर बार तो sequence में नहीं होगा. Every time it is not going to happen in this sequence कि पहले पैसे आए फिर लोन मिला, फिर पहले डिपॉजिटर आया उसने पैसे दिए, फिर मैंने रिजर्व रखा, फिर लोन लेने को आया. It will always not happen in this sequence, right? There are so many depositors coming at once, so many people asking for loan at once. There can be a situation with the bank. Bank can possibly have two situations. Bank को मैं अभी B की तरह लिख रहा हूं. First situation is bank में many depositors came. Many depositors came in the bank. But loan demand was only made by 2 people and let's say the quantity is equal. तो loan demand कम थी, बैंक के पास loan demand कम है और deposits हो गई बहुत ज्यादा. What is happening now? What is the situation of the bank? Bank has lot of liquidity. Lot of cash is lying with the bank. Lot of liquidity is there. Lot of cash is lying with the bank. दुनिया भर का कैश पड़ा है बैंक के पास. Is bank earning money on this liquidity? No. Is bank earning money on this liquidity? No. बैंक कहेगा भाई कुछ भी करो और लोन दो, बस लोन बांटो किसी भी तरह, क्योंकि हम तो पैसे ही नहीं कमा रहे, हम वापस कैसे करेंगे, राइट? बैंक सेज गिव लोन एट ऑल कॉस्ट्स. है ना, लोन दो, किसी भी तरह लोन दो, ठीक है? बट नहीं मिल रहा. बैंक ने सब ट्राई कर लिया. दे आर नॉट एबल टू फाइंड समवन हु विल एक्सेप्ट दिस लोन फ्रॉम देम. उन्हें नहीं मिल रहा. दे आर अनएबल टू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन हु विल टेक दिस लोन, राइट? They are unable to find any person who will take this loan. अब now what? Now if bank is unable to find a loan, मान लो बैंक को लोन नहीं मिलता, कोई भी नहीं लेता बैंक से लोन. Let's say बैंक से कोई भी लोन नहीं लेता, नहीं मिल रहा, उन्होंने सब करके देख लिया. Will they be able to repay these deposits? अगर बैंक को लोन नहीं मिल रहा, will they be able to repay these deposits? नहीं कर पाएंगे ना. कैसे करेंगे? लोन ही नहीं मिल रहा, कमाई नहीं हो रही तो इंटरेस्ट कैसे वापस पे करेंगे? So as a last resort, they will say to RBI कि सर हमें लोन नहीं मिल रहा, लोन देने के लिए कोई नहीं मिल रहा हमें. We are unable to give loan to anyone. You please take a loan from us. You please take a loan from us so that we can pay back deposits, so that trust in the banking system is maintained. As a last resort, take loan from us so that trust in the banking system is maintained. Therefore, ये सबको पता होगा, RBI is lender और बैंकर. लेंडर अभी दिखाऊंगा. बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. रटनी नहीं होती ये बातें, रटनी नहीं होती ये बातें. बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. दिस इज नॉट डिपॉजिट विद RBI. दिस इज नॉट डिपॉजिट. ये डिपॉजिट करने को नहीं कह रहे हैं RBI से. डिपॉजिट पे तो कम पैसे कमाएंगे. ये लोन लेने को कह रहे हैं. RBI को कह रहे हैं टेक लोन फ्रॉम अस. प्लीज टेक अ लोन फ्रॉम अस. आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीवन. प्लीज टेक लोन फ्रॉम मी. अब याद करो RBI की बैलेंस शीट में बोरोविंग्स भी थी.
देयर वर बोरोविंग्स ऑफ आरबीआई इन द बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई. मैंने कहा था मैं सबको समझाऊंगा कहां से आती हैं बोरोविंग्स. दिस इज वेयर दिस बोरोविंग इज कमिंग फ्रॉम. ये डिपॉजिट नहीं है, डिपॉजिट वाज डिफरेंट. This is borrowing of RBI. As a last resort, they are saying to bank is saying to RBI, please borrow. Please borrow. You will, as RBI, you will want to borrow, because if you don't do this, trust in the banking system gets eroded. Trust in the banking system gets eroded. तो आप भी borrow करोगे. What are you effectively doing here as RBI? As RBI, you are effectively adjusting the liquidity. You are adjusting the liquidity crisis. There is excess liquidity. You are adjusting the liquidity. समझ आई बात? Now, let's look at second case. Second case can be, this is bank. Bank has only 2 depositors, but many people have asked for loan. Many people have, many people are asking for loan. What is the problem now? Bank has less liquidity than it needs. उसके पास इतनी liquidity है ही नहीं कि वो लोन दे पाए. There is less liquidity than what it needs. आपने आज तक किसी बैंक को लोन के लिए मना करते हुए देखा है कि हम नहीं देते, हमारे पास पैसे नहीं है? Have you ever seen a bank say we will not give loan because we don't have money? They can say we will not give loan because they don't trust your ability to repay. That is a different story. ठीक है? इस रीजन पे कभी मना नहीं करेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है. They will say no to you कि हमें नहीं लगता you can repay, इसलिए हम आपको नहीं दे रहे, है ना? बट पैसे ना होने की वजह से कभी भी वो मना नहीं करेंगे. अब जब बहुत ज्यादा लोन डिमांड आ गई, बैंक विल से कि फाइंड डिपॉजिट्स फ्रॉम एनीवेयर. कहीं से भी डिपॉजिट लाओ, कहीं से भी डिपॉजिट लाओ, राइट? बट डिपॉजिट नहीं मिल रही. दे आर अनेबल टू फाइंड डिपॉजिट. They are unable to find more deposits. They will say, कोई नहीं, let me borrow from RBI. Let me borrow from RBI and I will loan it forward. मैं RBI से borrow करता हूं और मैं आगे लोन कर देता हूं. As a last resort, I can also borrow from RBI, lender of last resort. Right? What is RBI doing here? It is addressing or adjusting the liquidity crunch. Crunch means shortage. Liquidity crunch को RBI adjust कर रहा है through this process. Right? These two processes of borrowing from RBI and lending to RBI, borrowing and lending to RBI. लोन ले लो मेरे से प्लीज, या प्लीज मुझे लोन दे दो. प्लीज मुझे लोन ले लो या लोन दे दो. यार डिस्टर्ब मत करो यार चैट में प्लीज. राइट? आई एम टेलिंग यू दे आर नॉट फाइंडिंग इट फ्रॉम एनीवेयर मींस दे आर नॉट फाइंडिंग इट फ्रॉम अदर बैंक्स आल्सो. बाकी बैंक्स ने भी मना कर दिया. अब क्या? लास्ट रिजॉर्ट तो आएगा ही ना कभी ना. एट सम पॉइंट यू विल रीच द लास्ट रिजॉर्ट. नाउ this two things of lending to RBI and borrowing from RBI are basically done to adjust your liquidity. This facility in the RBI is called liquidity adjustment facility.
यू कैन, आरबीआई एज अ लास्ट रिजॉर्ट कैन हेल्प यू एडजस्ट योर लिक्विडिटी। सुना हुआ होगा ये वर्ड बहुत लोगों ने, समझा आज तक किसी ने नहीं होगा, मैं श्योर हूं, राइट। अभी हम देखेंगे आरबीआई कैसे इंटरेस्ट देगा, क्या करेगा, रुक जाओ, है ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, मुझे पता है मुझे पता है रट रखा होगा आपने, मैंने ही रट रखा था तो आपने रट ही रखा होगा, राइट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नाउ हाउ डज दिस बोरोइंग एंड लेंडिंग हैपन। सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या थी, लोन बहुत ज्यादा देने हैं, बोरोवर नहीं मिल रहे, लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच है तो आई वांट टू बोरो फ्रॉम आरबीआई। अभी बहुत ही बड़ा जादू दिखने वाला है आपको, आपने अपनी पूरी लाइफ, योर एंटायर लाइफ विल फील लाइक अ लाई इन नेक्स्ट 5 मिनट्स टू यू। पूरी जिंदगी, जिसने आज से पहले इकोनॉमी पढ़ा है, पूरी जिंदगी झूठ लगेगी, झूठ तो नहीं, बट योर लाइफ विल चेंज इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। आपने बोरो करना है फ्रॉम आरबीआई, you under liquidity adjustment facility you want to say from RBI please give me money as loan. You are the bank, as a last resort you are asking from this, as the bank you are asking for this, in return you are giving what, interest rate, some interest you are giving. ऐसी होती है बोरोइंग। आरबीआई के केस में बोरोइंग इज स्लाइटली डिफरेंट, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। आपको अगर आज बैंक से लोन लेना हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड। बैंक से लोन लेना हो तो पहले क्या चाहिए आपको, फर्स्ट यू नीड सम कोलैटरल। कोलैटरल दोगे ना तभी तो लोन मिलेगा, नहीं तो देयर इज नो, राइट। द कोलैटरल गिवन हियर इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉट पार्ट ऑफ एसएलआर। जो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बियॉन्ड योर एसएलआर कोटा है, आपकी एसएलआर कोटा में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं, उसके बियॉन्ड जो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उसके बियॉन्ड जो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी मींस गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड का मैं आपको डिफरेंस कैपिटल मार्केट में बताऊंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑलमोस्ट सेम थिंग। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ एसएलआर, आपकी एसएलआर में भी कुछ पड़ी थी वो हटा दो, उसके अलावा अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं एक्स्ट्रा, तो आप आरबीआई को दे दो और आरबीआई आपको मनी दे देगा। अब अगर आपने आरबीआई से बोरो किया है तो वापस भी करना पड़ेगा। अब ये वापस कैसे होगा, दिस यू आर नॉट गिविंग एज कोलैटरल, ये आप कोलैटरल की तरह नहीं दे रहे हो, यू आर एक्चुअली सेलिंग दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई, यू आर नॉट गिविंग दिस एज कोलैटरल। अभी बस एक सेकंड सुनना, अभी क्लियर हो जाएगा। You are not giving these as collateral, you are selling these to RBI. In your balance sheet it is written sold to RBI. तो फिर आप पूछोगे लोन कैसे हुआ, अगर ये सेलिंग है तो ये लोन कैसे हुआ। ये लोन ऐसे हुआ, मैं आपको भी बताता हूं। Let's say this loan period is for 15 days, 15 दिन के लिए लोन है। After 15 days RBI will say you purchase your old government securities, purchase the government securities you sold to me now. आपने मुझे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की थी, now you purchase those government securities. आपका 15 दिन में आप अपनी लिक्विडिटी ठीक कर लो, कर ली ठीक, परचेज द गवर्नमेंट, जो आपने मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की थी उनको वापस परचेज करो, in return you give me money. अभी भी ये लोन नहीं है, अभी ये क्या है, अभी ये सिर्फ ट्रांजैक्शन है, राइट। लोन कैसे बनाइए, आरबीआई कहता है कि आपने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची मुझे फॉर 100 रुपीज, आपने मुझे 100 रुपीज के लिए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची, यू टुक 100 रुपीज एंड यू सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
यू विल हैव टू रीपरचेज दिस, आपके ऊपर एक रीपरचेज करने की ऑब्लिगेशन है. You will have to repurchase this. You will have to repurchase this after 15 days at a higher price. आपको मान लो 105 रुपए में इन्हें रीपरचेज करना पड़ेगा, राइट? Repurchase this after 15 days at 105. Now this is effectively a loan of 15 days with interest rate of 5%. है ना? आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी आरबीआई को, आरबीआई ने आपको 100 रुपए दिए, आरबीआई ने कहा ये साइन करो कि यू विल रीपरचेज दिस इन 105 रुपीज 15 डेज लेटर. नाउ दिस इज अ लोन. नाउ दिस इज अ लोन. यस और नो? क्लियर? यस और नो? लोन है ना? अब ये अब तो लोन दिख रहा होगा आपको. व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस लोन? इस केस में व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? फॉर 15 डेज द इंटरेस्ट रेट इज 5%, है ना? 5% इंटरेस्ट रेट इज देयर. व्हाई इज देयर एन इंटरेस्ट रेट? ये तो ट्रांजैक्शन है, ये तो ट्रांजैक्शन है, इसमें इंटरेस्ट रेट आ क्यों रहा है? व्हाई इज देयर एन इंटरेस्ट रेट इन दिस ट्रांजैक्शन? बिकॉज ऑफ दिस रीपरचेज ऑब्लिगेशन. Because of this repurchase obligation, this is what is making it a loan. This is causing this interest rate. Can I call this a repurchase obligation rate? Can I call this a repurchase obligation rate? This is what is repo rate. ये होता है repo rate. This is where it comes from. ये टर्म आपने सुन रखी होगी, आई एम श्योर. This is where it comes from. There is a repurchase obligation at a higher price. The rate of interest on that price is the repo rate. ठीक है? This is repo rate. So what is happening here? RBI is saying, take money. You don't have liquidity. Your liquidity needs adjustment. You are facing a liquidity crunch. You are facing a liquidity crunch. Adjust your liquidity in 15 days. For 15 days, I will give you money. But for that money, sell me your government securities and sign a repurchase obligation that after 15 days, you will repurchase these government securities at some more money. Whatever rate of interest RBI chooses to charge for this transaction is repurchase obligation rate or simply repo rate. कुछ भी रटने का नहीं है, यहां पर सिर्फ समझने का है, सिर्फ समझने का है, कुछ भी रटने का नहीं है. ठीक है? अब दिस वॉज सिचुएशन 1, दिस वॉज दिस सिचुएशन, है ना? अब यहां से प्लीज रिलेट दिस. RBI chooses to increase the repo rate. What happens here? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सोच के देखना. अब इस ग्राफ को शिफ्ट करो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. द फैक्ट इज द सेम, इफेक्ट सेम है, बट देयर इज सम डिग्री ऑफ सेपरेशन. देखो, when RBI has increased the repo rate, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. आई होप आपने सोचा होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, नॉट दैट कॉम्प्लेक्स. ये अभी तक समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा. लिसन टू मी केयरफुली नाउ. RBI has chosen to increase the repo rate. If RBI chooses to increase the repo rate,
it becomes more costly for banks to borrow from RBI if repo rate was zero. अगर repo rate zero होता तो बैंक्स अपनी लोनेबल फंड्स की सप्लाई बढ़ा सकते थे आरबीआई से बोरो करके. अब repo rate 10% है. बैंक्स कैन नॉट एनी लॉन्गर बोरो फ्रॉम आरबीआई. अगर वो 10% पे बोरो करेंगे तो उन्हें 12% पे बेचना पड़ेगा, राइट? तो वो कहेंगे आरबीआई से बोरो नहीं करते, बहुत महंगा है ये, दिस इज टू एक्सपेंसिव. That means supply of loanable funds will move inward. When supply of loanable funds moves inward, then what happens? बाकी आपको पता है. अब मनी सप्लाई ये वो सब अब यहां से आप रिलेट कर लो, सेम इफेक्ट है. Interest rates of loans will increase, loan amounts will decrease, money will become more expensive, money supply will decrease, consumption will decrease, investment will decrease, aggregate demand will decrease, inflation will come down, growth will come down, unemployment will rise. समझ? बाकी तो अब सेम वही एक ही चीज कर रहे हैं हम तब से, है ना? अब तो कोई अभी तक तो कुछ नहीं रटा ना हमने. 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व कर चुके हो आप इन द पास्ट 2 आवर्स. You have exactly solved 20 questions of prelims in the last 2 hours without even knowing it. ठीक है, राइट? कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तक तो. चलो, नाउ सेकंड सिचुएशन was too many depositors, very few borrowers. Too many depositors, very few borrowers. अब you have excess liquidity, you need to adjust your liquidity. For this you will say to RBI, please take loan from me, प्लीज टेक लोन फ्रॉम मी. आरबीआई की लोनिंग, जो आरबीआई का लोन का प्रोसेस है वो सेम है. आरबीआई डज दिस लोनिंग प्रोसेस सिमिलरली. आरबीआई डज दिस लोनिंग प्रोसेस इन अ वेरी सिमिलर मैनर लाइक दिस. बट अब क्या हो गया? उल्टा हो गया. नाउ उल्टा हो गया. नाउ समथिंग ऑपोजिट हैज हैपेंड, दैट बैंक earlier was taking money, now bank is giving money. अब बैंक उल्टा पैसा दे रहा है. बैंक is giving money, RBI will give government securities, RBI will sign repurchase obligation. It is exactly the reverse of this process. The exact reverse of this process is called reverse repo rate. अब क्या होगा? बैंक इज गिविंग मनी टू आरबीआई, आरबीआई इज पेइंग सम रीपर्चेज ऑब्लिगेशन रेट, राइट? बैंक कहता है मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, हमें कोई लोन करने के लिए नहीं मिल रहा, 15 दिन के लिए आप लोन ले लो प्लीज. आरबीआई कहता है ठीक है, मैं आपको एक रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट का लोन मैं आपको वापस करूंगा. आई विल डू द सेम थिंग ऑफ सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेम थिंग इन अ रिवर्स मैनर. नाउ इफ यू वर आरबीआई गवर्नर, अगर आप आरबीआई गवर्नर थे तो व्हाट वुड यू कीप हायर? आप किस चीज को हायर रखते? इसको हायर रखते, रिवर्स रिपो रेट को हायर रखते, या रिपो रेट को हायर रखते? आप किस चीज को हायर रखते इफ यू वर आरबीआई गवर्नर? ऑब्वियसली रिपो रेट को हायर रखते. दिस यू आर रिसीविंग, आपको मिल रहा है रिपो रेट तो आपको मिल रहा है. रिवर्स रिपो रेट यू हैव टू पे, है ना? रिसीविंग को आप रखते हायर, रिवर्स रिपो रेट को आप कहते हैं कि ये मुझे पे करना है, राइट?
ताकि आपको नुकसान ना हो ना. वाई वुड यू डू दिस एट अ लॉस? वाई विल यू टेक लॉस फॉर दिस प्रोसेस? आप क्यों लॉस लोगे इस प्रोसेस के लिए? आप इफेक्टिवली क्या कर रहे हो? यू आर इफेक्टिवली लोनिंग टू बैंक्स एंड टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, from banks. You cannot afford to lose money in this process. आप इसमें प्रोसेस में पैसे लूज नहीं कर सकते. At best you can keep it equal अगर आप बहुत दयालु हो. But ideally you will say repo rate should be higher than reverse repo rate. है ना? बैंक कर क्या रहा है? आरबीआई क्या कर रहा है? लोनिंग फ्रॉम बैंक्स, basically loaning to bank and taking loan from bank. This RBI is doing, है ना? RBI is acting as, कुछ नहीं रटना होता, बस लॉजिक लगाना होता है. बैंकर्स बैंक. RBI is acting as bankers bank. Bankers bank. ये भी आपने सुना होगा, RBI is bankers bank because you are doing the same thing that banks do to us. बैंक हमारे लिए क्या करता है? लोन डिपॉजिट. बैंक के लिए लोन डिपॉजिट कौन कर रहा है? आरबीआई. आरबीआई इज बैंकर्स बैंक. यू वुड से हाउ डू बैंक्स अर्न मनी? यहीं से स्टार्ट किया था. बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं? बैंक्स विल से माई लेंडिंग रेट, आई हैव अ रेट ऑफ लेंडिंग, I have a rate of deposit. The rate that I pay on deposits, the rate that I charge on lending. Any bank charges the lending rate and any bank pays the deposit rate. Lending rate must always be higher than deposit rate. Lending rate minus deposit rate is effectively the percentage where bank makes profit. This percentage, the difference between your lending rate and deposit rate, this percentage between your lending rate and deposit rate is called spread. Spread. Let's say bank says my lending rate is 10%, I will lend at 10%, I will pay 5% or I will pay 6%. Then what is my spread? 4%. 4% profit I need to make to run everything properly. ये 4% में मेरा रेवेन्यू आएगा. इससे मैं I will pay what from this? Wages, interest, profit, rent. I will pay. आगे जाके इंटरेस्ट से कंफ्यूज मत होना. I hope it is clear. 4% is the revenue you make. इससे आप लैंड की वैल्यू पे करोगे, लेबर की वैल्यू पे करोगे, कैपिटल की वैल्यू पे करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू पे करोगे. राइट? यू विल डू ऑल दीज थिंग्स. तो बैंक कहता है मुझे 4% तो बनाना ही है. आई हैव टू मेक 4%. राइट? आरबीआई इज ऑल्सो डूइंग दिस प्रोसेस. आरबीआई का लेंडिंग रेट क्या है? रिपो रेट. आरबीआई का डिपॉजिट रेट और रिवर्स लेंडिंग रेट इज रिवर्स रिपो रेट. आरबीआई का रिवर्स लेंडिंग रेट इज रिवर्स रिपो रेट. आरबीआई ने अपना स्प्रेड फिक्स कर रखा है. आरबीआई लेट्स से सेज मेरा जो स्प्रेड है दैट इज 1%. देन आई कैन से दैट repo rate will be reverse repo rate plus 1%. I have fixed this. Repo rate is reverse repo rate plus 1%. This 1% is my profit. What is this profit also known as? Seniorage. Right? Now if I increase the reverse repo rate, मान लो मैं reverse repo rate increase कर दूं, तो automatically repo rate will increase. अगर this is true, if I choose to keep the spread fixed, they will be related. RBI can choose to increase all of them together also. RBI ये कह सकता है कि मैं spread fixed रख के इसको बढ़ा रहा हूं, और RBI can say
आई कैन स्पेसिफिकली चेंज दिस ऑल्सो. आरबीआई कहता है मैं स्पेसिफिकली इसको चेंज कर देता हूं. RBI is not profit making organization, but this is a banking principle. RBI has to agree to banking principles. RBI is also not loss making, na? Why will RBI want to make a loss to help other banks? Right? This is how RBI operates. Okay, they can choose to simply change reverse repo rate. They can simply choose to change reverse repo rate and change the spread. कि spread में zero कर देता हूं. They can choose to operate all of this together also. अब मान लो in a hypothetical scenario, let's say that RBI says we are only increasing reverse repo rate. What happens to this graph? RBI says we are only increasing reverse repo rate. आप एक बैंक के सीईओ हो, आपके पास दो चॉइस हैं, या तो मेरे को लोन दो या आरबीआई को लोन दो. इंटरेस्ट दोनों में सेम मिलेगा. या तो मेरे को दो या आरबीआई को दो, इंटरेस्ट दोनों में सेम है. तो क्या करोगे आप? मैं बहुत रिस्की इंडिविजुअल हूं, प्लीज डोंट टेक दिस द अदर वे. माय रिस्क ऑफ नॉट रीपेइंग द लोन इज वेरी हाई, है ना. आरबीआई हैज हार्डली एनी रिस्क. आरबीआई इतना पैसा है, इतना प्रॉफिट है, वो दे देंगे आपको लोन वापस. मेरा रिस्क बहुत हाई है, तो बैंक्स आरबीआई को देंगे. इफ यू इंक्रीज द रिवर्स रिपो रेट एंड कीप इट वेरी हाई, आरबीआई विल चूज टू पार्क देयर मनी. बैंक्स विल चूज टू पार्क देयर मनी विद आरबीआई. बैंक्स विल से आरबीआई में ही इतना बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बाहर क्यों देना. अब ऑल्दो आई हैव मेड इट फेयरली सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, फिर भी अगर कभी रिवर्स रिपो और रिपो में कंफ्यूजन हो जाए, फिर भी अगर हो जाए, देयर इज अ सिंपल वे, अ मेमोरी ट्रिक टू रिमेंबर. आई होप यू विल नॉट नीड दिस. इफ यू नीड दिस, माय टीचिंग हैज फेल्ड. बट अगर आपको फिर भी कभी एग्जाम में ये सिचुएशन हो जाए, कभी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि एग्जाम में याद नहीं आ रहा, what is happening in reverse repo process? Reverse repo में banks are parking their funds with RBI. You generally park a car in reverse gear. So banks parking fund with RBI is reverse repo rate. I hope you don't have to remember like this, but in case you forget, you can remember like this. ठीक है. अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू रिमेंबर. लॉजिक आपका क्लियर है. यू नो दैट दीज टू रेट्स आर लिंक्ड टुगेदर. यू नो हाउ व्हाट इफेक्ट इट इज गोइंग टू हैव. ठीक है. जरूरत नहीं है, बट फिर भी कभी कभी एग्जाम में स्ट्रेस सिचुएशन में याद नहीं आता, तो देन वी कैन यूज दिस. ठीक है. चलो नाउ ये हमने देख लिया. प्लीज इसको पढ़ना जरूर. इट इज द सेम थिंग दैट वी हैव बीन सीइंग. नाउ नेक्स्ट. अभी तक क्लियर है? अभी तक क्लियर? वी हैव अंडरस्टूड दीज फोर थिंग्स. I am sure you have read these four things also before today. I hope now you will not need to mug up, है ना. अब I hope आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. And now you can relate further not only to inflation but to growth, but to unemployment, but to various other things in the economy. ठीक है. Now let us take another break of 2 minutes. 3 minutes कर लेते हैं चलो. And I'll be back after 3 minutes to finish this class. There are 2-3 more things we need to learn. I hope आज मजा आ रहा हूं. I hope today's class is fun for you. मुझे बहुत मजा आ रहा है. I hope somebody had taught me like this. तो मैं रटता नहीं हमेशा एग्जाम से पहले.
I have read in 12th class by mugging up. क्यों भाई? Why did you read in 12th class by mugging up? I am speculating that you might give one more attempt, sir, and be on the list again. क्यों? Whatever I had to experience with being on the list, I have already experienced. This is much better. This is much better for me. Where will I find, this jadui experience there? Although the service is much more magical, I think. But I enjoy this. I really enjoy this. Anyway, chalo. Now, अभी तक हम क्या देख रहे हैं? Repo, reverse repo, etc., etc. One more tool is there called marginal standing facility. This is the last tool we have to understand. ये almost आखिरी tool है जो हमें समझना है. I am also fairly tired. So because I haven't slept, not that class में कुछ थकान नहीं हो रही है. I have just not slept well. Right? So we will now understand this. Think about this. For repo and for reverse repo, what is the thing that is being used? It is government security. Government security is being used. Now, understand this. Are there some other government securities also with the bank? Government के बैंक के पास कुछ और government securities भी हैं. Does bank have some other government securities also? कहीं पे हैं क्या? Where are they? If yes, where? They have some other government securities lying in the SLR also. यहां पर जो government securities use हो रही हैं, they are not SLR securities. They are not part of your SLR quota. They are not part of your SLR quota. Security bond for now we'll say same. We'll understand the difference when we read capital markets. Now, SLR quota में भी कुछ securities हैं. Ideally, we are not touching them. हम SLR की securities को touch नहीं कर रहे हैं. For this lending and borrowing, we are not touching SLR securities because SLR are technically meant to protect against a bank run.
है ना? नाउ इमेजिन अ सिचुएशन वेयर बैंक हैज अ लिक्विडिटी क्रंच. बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, तो यहां पर क्या ऑप्शन है? रीपो का ऑप्शन है. यहां पर रीपो का ऑप्शन है बैंक के पास, है ना? रीपो के लिए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए. So far so good. What if bank does not have these extra GSEC with it? बैंक के पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है राइट नाउ. नाउ दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन. बैंक नीड्स मनी, बैंक नीड्स लिक्विडिटी, बट बैंक डज नॉट हैव दिस एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद इट ऑल्सो. बैंक के पास ये भी नहीं है, तो बैंक ये नहीं कर सकता. आरबीआई से पैसे लेने के लिए बैंक ये नहीं कर सकता. बैंक डज नॉट हैव दिस एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इट इज ऑल्सो फेसिंग अ लिक्विडिटी क्रंच. अब बैंक goes and tells RBI, I need liquidity, but I do not have any extra government securities with me. I cannot use the repo option. RBI says, okay, no problem. For a limited time, for a very limited time, you can use your SLR government securities to obtain liquidity. But this we will allow you only to ride over this emergency situation. Only for this emergency situation you can also reduce or use the SLR securities. आपकी SLR let's say right now is at 19%. इस 19% आपकी obligation है. Let's say all of this 19% is government securities. All of this is government securities. 19% का 19% government securities में है इस बैंक का. But it does not have any extra government securities to seek repo rate. आरबीआई के पास जाता है, कहता है सर हमारे पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है एंड वी आर फेसिंग अ लिक्विडिटी क्रंच, प्लीज एडजस्ट माय लिक्विडिटी. आरबीआई सेज फॉर दिस इमरजेंसी सिचुएशन फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम आई विल रिड्यूस योर एसएलआर लायबिलिटी फ्रॉम 19% to 18%. आई विल गिव यू 1% ऑप्शन, 1% margin of whatever is standing in your quota of SLR. जो आपके स्टैंडिंग कोटा ऑफ SLR में जो भी पड़ा है उसका मैं 1% मार्जिन आपको देता हूं कि आप उसको यूज करके लोन ले लो अभी के लिए, जस्ट फॉर दिस इमरजेंसी. You can adjust your liquidity, you can adjust your liquidity through a margin of 1% on your standing SLR quota. Just for now. Process will be same. Process repo वाला ही होगा. But you can use this for now. अभी इमरजेंसी में आप इसको यूज कर लो. अभी के लिए प्लीज यूज कर लो बिकॉज दिस क्राइसिस शुड बी टाइडेड ओवर. अभी के लिए ये क्राइसिस हम टाइड ओवर करते हैं. दिस इज नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. जस्ट फॉर नाउ. As a margin of your SLR, I will reduce for a short time so that you can borrow from this also. Marginal standing facility. The rate I will charge from you is MSF rate. Process is the same, but I will charge from you MSF rate. Earlier I was charging from you repo rate. Now I will charge from you MSF rate. Now you are governor of RBI. Will you want to keep repo rate higher or MSF rate higher? सोच के बताना, रीजन भी साथ में देना. आप MSF रेट को repo से ज्यादा रखोगे या कम? MSF will be higher than repo or lower than repo as per you. पहले तो बताओ MSF समझ आया? Is MSF clear to you now? Most people have given the right answer. एक दो गलत आंसर भी दिख गए हैं मुझे.
अच्छा चलो, we will answer this question. Is the concept of MSF clear to you? If the concept of MSF clear to you कि क्या हो रहा है यहां पे, is the concept clear to you कि हो क्या रहा है, ऊपर नीचे देख लेंगे. Is the concept clear to you? ठीक है. अच्छा, now understand what is happening. Bank, if it wants loan from RBI using extra government securities, bank will pay dash rate. Answer first question. Answer first question. Bank wants loan from RBI using extra government securities. Bank will pay dash rate. Bank will pay repo rate. Banks want loan from RBI using SLR government securities. Bank will pay dash rate. Answer second question. MSF rate. अब as governor of RBI, this is 1, this is 2. As governor of RBI, which of these would you want to encourage? आप क्या encourage करना चाहते हो, 1 या 2? Would you want banks to do this, more of this or more of this? More of 1 or more of 2? आप क्या चाहते हो कि ज्यादा क्या हो? आप obviously चाहोगे that this should happen more. This should happen more. This should happen more, yes. If this should happen more, if you say this should happen more, will you charge this rate higher or this rate higher? आप चाहते हो कि MSF वाला काम कम हो, only in emergency situations हो, only when there is emergency people should do this. तो आप इस रेट को ज्यादा रखोगे ना, बैंक से ज्यादा पैसे मांगोगे. अरे अब कौन रिपो हायर बोल रहा है? यू वॉन्ट टू एनकरेज दिस. आप चाहते हो बैंक रिपो पे लोन ले, तो आप कॉस्ट ऑफ दिस लोन विल बी लोअर, कॉस्ट ऑफ दिस लोन विल बी हायर, कॉस्ट ऑफ दिस लोन हैज टू बी हायर बिकॉज यू वॉन्ट कि एमएसएफ से कम लोग लोन ले, लेस पीपल शुड टेक लोन फ्रॉम एमएसएफ. सो यू नीड टू मेक दिस रेट मोर. आप यहां पर ज्यादा पैसे लोगे, यहां पर कम पैसे लोगे, यहां कम पैसे लोगे तो ये चीज ज्यादा होगी, यहां पर ज्यादा पैसे लोगे तो ये चीज कम होगी. सो यू विल हैव टू चार्ज दिस रेट हायर. आप ज्यादा चार्ज करोगे, ज्यादा पैसे मांगोगे इस काम के लिए, बिकॉज आप नहीं चाहते ये हो. अगर आप इसको सस्ता कर दोगे, सब अपनी एसएलआर की सिक्योरिटी दे देंगे. डू यू वांट दिस टू हैपन? नो. सो यू विल मेक दिस फेयरली एक्सपेंसिव. You will make this fairly expensive, at least more expensive than this. So in RBI logic, MSF has to be higher than repo rate. Repo rate has to be higher than reverse repo rate. All of these three, अभी तक ये जो तीन हम देख रहे हैं, all of these three have the effect of what?
all of these three have the effect of liquidity adjustment. तीनों हमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट ही हो रही है. ये इमरजेंसी केस है, ये नॉर्मल केस है, ये उल्टा केस है. यू विल हैव दिस, ये तो हम देख चुके हैं पहले. यू विल कीप दिस हायर, कि बैंक से ज्यादा पैसे मांगो, अगर वो अपने इमरजेंसी फंड को यूज कर रहा है तो ज्यादा पैसे मांगो. These three are together known as liquidity adjustment facility of RBI. है ना? RBI will say MSF is equal to repo rate plus 1%. Repo rate is equal to reverse repo rate plus 1%. Or to put it better, reverse repo rate is equal to repo rate minus 1%. Is this clear? Is this clear? MSF, अगर repo rate 4 तो MSF 5, RRR 3. So you put this value as 4, this becomes 5, this becomes 3. So now your repo rate, reverse repo rate and MSF are tied together. If these statements are true, I simply have to change the repo rate. If I just change the repo rate, everything else will change automatically. सब कुछ रिपो रेट पे ही डिपेंडेंट है. मैंने रिपो रेट को ऊपर कर दिया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, रिपो रेट को नीचे कर दिया सब कुछ चेंज हो जाएगा. राइट? Repo rate is known as my policy rate. I will just control repo rate using monetary policy. Everything else will change automatically. Everything else will change automatically. All of this will exist in a corridor. Right? All of this will exist in a corridor. एक कॉरिडोर की तरह होगा. मतलब whatever is repo rate, add 1%, you get MSF, subtract 1%, you get reverse repo rate. I am controlling repo rate using my monetary policy. I am controlling repo rate using my policy. ठीक है? What is this? क्या है ये? This is the policy corridor. And this is the policy rate. Policy rate, policy corridor. Monetary policy में mainly, although RBI can choose to control any of these things, RBI can choose to control any of these things, and of course I am sure you are aware that MSF will have same effect. जहां यहां जो यहां repo rate का effect था, MSF का भी वही effect होगा, right? Because process is same, just other government securities are being used. Process तो same process is followed जो repo में थी, बस government securities दूसरी हैं, है ना? तो RBI can choose to increase the MSF also. In its monetary policy, RBI can choose to either change CRR, SLR or any of these three. These three together are known as liquidity adjustment facility. RBI can choose to change any of this. RBI chooses to control this. Usually in monetary policy decisions, usually in monetary policy decisions, RBI controls this. This is known as the policy rate. This is together known as LAF. The difference between these rates becomes policy corridor. All concepts clear? इन सबका इफेक्ट भी क्लियर? अब इन्फ्लेशन है तो मैं क्या क्या करूं?
डिफ्लेशन है तो मैं क्या क्या करूं? नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब किसी को कोई डाउट किसी भी चीज में यहां पे? ठीक है। अब it is 1:30, I had to teach one more topic today, but I will not, and I will give you a homework. एक मैं होमवर्क देता हूं आपको, प्लीज रिवाइज दिस। प्लीज, आई नो बहुत सारी चीजें हैं, काफी सब पढ़ लिया हमने, राइट? प्लीज रिवाइज दिस। जितना हमने पढ़ा इसको प्लीज रिवाइज कर लेना। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टुमारो ऑल्सो वी हैव अ क्लास। अरे यार, आई कैन नॉट रिपीट थिंग्स। आपके पास वीडियो आ जाएगी अभी रिकॉर्डेड, आप दोबारा देख लेना, है ना? नाउ प्लीज रिवाइज दिस। मैं अभी नोट्स देख लेता हूं। आई जस्ट गो आउट एंड सी, आई जस्ट गो आउट टू द स्टूडियो। मैं ऑफिस नहीं हूं, आई जस्ट गो एंड सी। विद इन हाफ एन आवर दे शुड बी अप। ठीक है। टुमारो वी हैव अ क्लास एट सेम टाइम। एक्चुअली लेट्स टेक इट एट 4 PM। कल 4 बजे मिलते हैं। सॉरी, थोड़ा ऊपर नीचे के लिए सॉरी। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। थोड़े दिन सोने दो मुझे, थोड़ा दिन नहीं, थोड़ा टाइम। सो 4 PM टुमारो। 4 PM tomorrow, 4 PM tomorrow we are going to continue from here. I am assuming that अभी सेशन खत्म नहीं हुआ यार, अभी तो तुम्हें पॉलिटी के 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। अभी it's not over yet. It's not over yet. अभी तो 15 questions of polity are left for you ना. But 4 PM tomorrow we have this class, and at 4 PM tomorrow please come after revising all of this. इसको रिवाइज करके ही पहुंचना कल। इससे from this there is going to be many questions in the prelims. बहुत सारे questions आए हैं prelims में from all these concepts. Please revise these concepts properly. ठीक है? Please revise these problem. Maybe हो सकता है टेस्ट हो, है ना? Please revise these properly. Please revise these properly. ठीक है? Please अच्छे से पढ़ लो। ठीक है? क्लियर? चलो अब करते हैं एक्टिव रिकॉल। 15 क्वेश्चन, 15 बार में नोटबुक खोलूंगा। ठीक है? जिन जिन पेज पे खुल गई उन पेज पे देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टफ क्वेश्चन आ गया पहला आपके लिए। रेडी हो? एवरीवनस रेडी फॉर एक्टिव रिकॉल? 15 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी के, आई प्रॉमिस, सो आई विल डिलीवर। 15 क्वेश्चन करें एक्टिव रिकॉल पॉलिटी के। रेडी? पहला खुल चुका है क्वेश्चन। ठीक है। टफ क्वेश्चन आ गया है पहले ही। Does the principle of locus standi apply in habeas corpus? यही उम्मीद थी मुझे। ये क्या होता है? वेरी गुड। मोस्ट पीपल आर गिविंग द राइट आंसर। पढ़ाऊंगा नहीं मैं, आई कांट टीच यू लोकस स्टैंडी। पढ़ो अब जाके। आंसर here is no. Answer is no. Why is answer no? This you have to find out. Please read. अरे 2026 वालों को नहीं है जरूरी अटेंड करना यार। You will have your polity classes. You will have your polity classes. आप अगर this is not important for you to read this. Okay, next question.
कैन आई कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता हूं? नोबडी विल वोट फॉर मी, डिफरेंट स्टोरी, बट कैन आई कॉन्टेस्ट? इफ नो, व्हाई नॉट? इफ नो, व्हाई नॉट? यस कौन बोल रहा है भाई? अरे यस कौन बोल रहा है? मैं 35 साल का लगता हूँ क्या तुम्हें? एज इज 35 years. डू आई रियली लुक 35? प्लीज यार यस मत बोलो यार. दिस इज my entire skincare routine will fail if you say yes, है ना? एज इज 35. ठीक है, आई एम नॉट 35 yet. Now, next question. What is reprieve? What is reprieve? No, because you are not a member of parliament. अरे ये नहीं है condition. Qualified to be member of Lok Sabha condition है. It's not necessary to be member of parliament to be. Was Draupadi Murmu ji MP before she became president? What is reprieve? कर दिया गलत. अरे reprieve is not type of democracy. वो recall होता है. It is not suspension of punishment also. Reprieve is temporary stay. Temporary stay. Temporary stay given. Temporary stay. अभी के लिए टेम्पररी स्टे दे दिया, अभी मत एग्जीक्यूट करो, रुक जाओ थोड़ा टाइम. दिस इज रिप्रीव. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस आई एम ऑलमोस्ट श्योर नोबडी विल नो. First case where doctrine of eclipse was applied. First case when doctrine of eclipse was applied. मुझे पता था, नहीं पता होगा तुम्हें. अरे आई सॉ द राइट आंसर. तुषार, वेरी गुड. इट वॉज भिकाजी नारायण केस. नाउ गो रीड अप. थोड़ी सी मेहनत करो. भिकाजी नारायण केस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the longest time that an ordinance can last? Longest time that an ordinance can last. ऑलमोस्ट सबका गलत है. Is it 6 months or is it 6 months and 6 weeks? ये है. You will check. I will not tell you. Which fundamental right? Which fundamental right?
17 कौन बोल रहा है यार? It's 18. Is this allowed? Of course it's allowed, but why is it allowed? Why is it allowed? Because it is an academic title. It is an academic title. Academic title based on merit. Good. Who elects Vice President of India? Who elects the Vice President of India? MPs of both houses. Good. MPs of both houses. Now, next question. लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन हैं. Parts of Constitution where amendment needs ratification by states. There are 5 areas like this. बताओ. पांच एरियाज हैं. कौन कौन सी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट विल रिक्वायर रैटिफिकेशन? देयर आर 5 ब्रॉड एरियाज. पार्ट्स छोड़ दो, एरियाज. देखो, सबसे पहला पार्ट क्या है? इलेक्शन. जहां भी एरियाज. वन इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. along with election of president there is also high court in the states or union territories. There is also extent of executive power. This is first area. Second area is extent of legislative power. Legislative power is given in Schedule 7. Third area is representation of states in parliament. Fourth area is judiciary. Chapter 4 of part 5, chapter 5 of part 6, chapter 1 of part 11, and last area is article 368. आर्टिकल 368 इटसेल्फ, खुद ही आर्टिकल को भी तो नहीं चेंज कर सकते ना. आर्टिकल 368 इटसेल्फ. ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. go and revise the things that we have studied today. There are many previous year questions. I have deliberately taught slow today. There are many previous year questions that have appeared from these topics. बहुत ज्यादा टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए हैं. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. We will be able to solve all of them if you revise these properly. कुछ भी रटना नहीं है, बस ग्राफ खुद बना लेना. Make the graph yourself. ठीक है, चलो. Hope you enjoyed the class. We'll see you tomorrow at 4 p.m.